it will getting converted into YouTube, and it takes some time before we are ready to with those YouTubes. So the second phase of this conference is the online presentations. So many of you opted to present online because you can't come, and some of you could not come. They are planning to come, could not come, and so we brought those papers here in online presentations. So as far as the rules are concerned, everybody has 10 minutes per presentation. Time is important, so try to finish in 8 minutes or so, and maybe a couple more minutes before our session chair will request you to kind of wrap up. Managing time is very critical. So without much ado, let me first pray to Sri Ramji and then request the session chair to take over. लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। So let's get started, and it's my great honor and privilege to invite today's first session is on management lessons from Ramayana, and there are 8 papers scheduled for presentation. And the session chair is my good old friend. I mean, good old friend in terms of time, but he is very young. I'm the old, he is the good. That's the connection. So he's a good friend and an old man like me. And that's Professor Rahul Anant Kulkarni. Rahul ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Now it's your day. जय श्री राम, नमस्कार नमस्कार वेलकम ऑल, स्वागत है सबका. It's my privilege to be here, and thank you very much, Om sir, for this privilege. As we are having 10 minutes per presenter, and I will remind you after 8 minutes, you are all requested to please complete your presentation within 8 minutes. So we are starting with the first presentation, the golden deer of the Ramayana, lessons in finance, governance, psychology, and decision making. I request Venkatesh Vedmati for the presentation. Please. Thank you. Thank you. Namaskar to all of you. Good evening. And I thank the organization for giving the opportunity. Wonderful initiative. Thank you for it. So I do not want to use any slides and other things. So to have maximum coverage, I will be talking only. So I have chosen the subject Golden Deal. The lessons we can learn, management lessons, or the lessons we can from the episode. The Golden Deal in Ramayana is a unique situation where Ravana has decided to have Sita at any cost, by adharmic way also. So he plans, he forces Maricha to come in the guise of golden deer. So the golden deer passes near the ashram. So Sita Mata gets attracted by it. So she requests Sri Rama to get me that. I like that, so I want to have it. Sri Rama values the Sita's aspirations, and he decides to go and catch the golden deer. So he requests and orders Lakshmana to take care of the ashram and guard Sita Mata. So in the meantime, Ravana come in the guise of a sadhu, and while he was
uh, what do you call, asking for the food. So he manipulates and takes away. Before that, what happens? See, when Rama was chasing that, he hears the noise, "Oh Lakshmana, oh Lakshmana." So Sita Mata feels that King Rama is in trouble. So he orders and Lakshmana to go and help the brother. But when Lakshmana says that I'm on the orders of Rama to guard, so he uses the words which hurts the Lakshmana. So he decides to go and save Rama. But in the meantime, Ravana kidnaps Sita and go. This is the main this. What we can learn from this. See, I have chosen 4 themes out of this, from finance, family, psychology, and decision making. So let us come to the finance. See, is there any parallel regarding golden deer, Maya? So golden deer is a Maya. It doesn't exist. Even Sita Mata, if she has thought that whether the golden deer really is there in such a animal, a little bit of thought could have solved many of the problems. So what we can see in finance, golden deer is a Maya, it doesn't exist. So similarly in finance, we can see in present day lot of scams that are happening. Every day we read in the newspaper a lot of financial scams. You can double your money within short time. Offer you a job which pays higher salary, digital arrest. So many things are coming. It is just a Maya only. It is equivalent to golden deer. So when Sita Mata get attracted to the golden deer, similarly the normal human beings gets attracted. Everybody wants to have the best within the short time. So they get attracted and they fell into the trap of the fraudsters. So people are losing money because of such immediately jumping to the conclusion to have the wealth. Similarly, digital arrest is happening because they are targeting the very senior citizens. See, here it is also a digital arrest is not as this one, it is in the form of a weapon. Say they say we received a parcel which has got drugs, or we say that there is a money laundering case against you, so many things. But within that 10-15 seconds, people become succumb to that pressure and they lose the ability to think. So this is why golden deer, what we have to, in the financial lesson, we have to learn is that, as our Prime Minister Modi says in finance, stop, think, and act. So in finance, no. Hello, Venkatesh ji. I also don't hear him. Yes. Anybody is able? Oh, let me see. Venkatesh ji? Hello? Rahul, are you able to hear him? I don't hear him. No, sir, I'm not able to hear.
It's frozen. I don't know what's going on. Hello, Hello, Venkatesh. Hello, Venkatesh sir. Sorry, there was some technical problem. Yes, sir. Please go ahead. Yeah, sorry. In case of artificial intelligence, we rely heavily on the output generated by AI. There is no means to check whether it is correct or not. So even in the banks and financial institutions, they depend heavily on the artificial intelligence outputs, especially financial ratios, other things. So it is very important that the data we generated out of artificial intelligence analysis, there should be a counter mechanism to check and the decisions are taken. Otherwise, it will be equivalent to a golden deer moment. This is one from the financial. And in case of the family, what I tell you, even see when Sita Mata asked for golden deer, Rama immediately accepted it and went. What we could have examine is whether Rama could have known that the golden deed does not exist like that, whether he could have advised Sita that educated it doesn't exist, so we should not go after that. So it happens in daily family life. When our spouse, children, or near ones, when they ask for certain things, we what we call moha. Out of moha, we try to get it and make them happy. Sometimes it becomes very costly. So in the family, whatever may be thing, especially in the age of present day children also, in the age of Instagram and Facebook and other things, everybody wants to have a shiny part of it, their life. They want to acquire uh, beyond their capacity. So there is a time that we should not get into where, if Rama could have thought that, advise Sita, we should not have gone for that golden deer, whether that problem could have been uh, stopped. That is one. Number two, so he requests Lakshmana to take care of Sita. He gives a, what do you call, a responsibility to Lakshmana. But what happens when Sita Mata hears the voice, O Lakshmana, she becomes panic. In the panic, she loses, momentarily say, she loses the control and uh, forces Lakshmana with very hurtful words that he has to go. So it is the Lakshmana's dilemma whether he has to adhere to the responsibility given by Rama, or he has to hear the words of Sita. It is a dilemma, dicey situation. So in that situation, this we face every day in our life. So we have a responsibility, but we have a commitment or a forceful request from the people near and dear ones. It may happen in what do you call, in the office also. So there, in the office situation also, what happens if a higher up, if a finance, let us take the example of a credit officer in a bank. He has to he has loan application has come, but it doesn't have fit into the rules and regulations. But there is a pressure from the top of the management, from one of the board member or some influential member, to sanction to a particular party.
So it is a dicey situation whether he has to adhere to the rules and regulations or to adhere to the dikkat of the higher. So this is a situation where anyone has to take care what is right, not what who says what is right, what is dharma. This is the one. So these are all the things, and the psychology also. See here, we get pressurized by the tough talks, sweet talks, and other thing. So we have to Sir, develop the last 2 minutes, ability please. to analyze the things and take the correct decisions. So the golden dare moment can happen to anybody in any form. So the solution to this is think, analyze, act, and take correct decision. So with this, I will stop my talk, and thanks you for giving an opportunity. Thank you, sir. Thank you very much, Venkatji, for wonderfully correlating the issue of golden deer with the modern kind of aspects. Any Thank you. questions, please? Okay, we will go for the next presentation. Thank you. Regent of Ayodhya Leadership Lessons from Bharata's Life in the Ramayana by Dharmesh Kumar. Yes, Dharmesh Kumar ji. You have 10 minutes. Please complete your presentation within 10 minutes. Thank you. श्री गुरुभ्यो Please make it नमः। in presentation mode. Sir, please press F5. Yes. श्री गुरुभ्यो Yes, नमः। fine. श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम धर्मेश है और मैं आईआईटी खड़गपुर में एक शोधार्थी हूँ। मेरा आज का विषय है रीजेंट ऑफ अयोध्या लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम भरताज लाइफ। तो सबसे पहले बहुत ही सुंदर पंक्ति है जो कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। अर्थात भरत जी राम जी के सबसे प्रिय भाई थे। यहाँ वो बता रहे हैं हनुमान के बारे में कि भरत जैसे प्रिय तुम भी मेरे भाई हो। तो रामायण के अनेक ऐसे पात्र हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। अगर लीडरशिप की बात की जाए तो राम के अलावा भी रामायण में कई ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में लीड किया है। चाहे वो भरत हो, लक्ष्मण हो या विभीषण हो, चाहे हनुमान हो, सबने अलग अलग परिस्थितियों में एक समूह को या सेना को या किसी तरह से लीड किया ही है। तो ऐसे में भारत के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब भारत थोड़ा सा रामायण के बारे में तो सभी जानते हैं। बालकांड में एक श्लोक आता है, यावद स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक इस धरती पे पर्वत रहेंगे और नदियां बहती रहेंगी तब तक ये रामायण का कथा लोक में प्रचारित होता रहेगा। ये खुद ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि को बताते हैं रामायण के महिमा के बारे में। अ, इसमें 7 कांड और 24,000 श्लोक है और महर्षि वाल्मीकि इसके रचयिता हैं। तो लीडरशिप की बात हो रही है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक लीडर कौन होगा। तो इसके लिए धनंजय ने 10 रूपक में बड़ा ही सुंदर लिखा है कि नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष प्रियंवद रक्तलोक सुचिर वाग्मी रूढ़वंश स्थिरो युवा
बुद्धि उत्साह स्मृति प्रज्ञा कलामान समन्वितः सुरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुश्च धार्मिकः। भले ही यहाँ धनंजय एक ऐसे लीडर के एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो मंच पे जाके किसी व्यक्ति का किरदार निभाता है, लेकिन ये जितने भी गुण धनंजय ने बताए हैं, अगर हम देखें तो एक जो आम जिंदगी में भी एक जो नेता है, एक जो लीडर है, उसके लिए सारे बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो भी मंच पे मंचन किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, तो जिस पात्र का वो मंचन कर रहा होता है उसके सारे कम से कम मंचन करने के समय उसके सारे गुण उसमें होने चाहिए, तभी उस पात्र के साथ वो न्याय कर पाता है। भरत के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा दशरथ के और महारानी कैकेयी के पुत्र थे। और इन्होंने एक आइडियल पुत्र, एक भाई और एक नेता के रूप में खुद को रामायण में स्थापित किया। जैसे राम सभी गुणों के सागर है, वैसे ही भरत में भी जो भी मानवीय गुण है वो सब भरत में दिख जाते हैं। उनका राम के प्रति प्रेम या भक्ति समर्पण भी हम सब देख सकते हैं। जब भरत अपने नौनिहाल में थे, तब उनको एक स्वप्न आया था कि उनके पिता गधे पे सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर तेजी से जा रहे हैं। तब उन्होंने ये स्वप्न बताया अपने अ, मामा और नाना को। उसके बाद दूत भी पहुंच जाते हैं जो कि भेजे गए थे उनको बुलाने के लिए। तो वहां से जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि राम वनवास जा चुके हैं और उनके पिता भरत की मृत्यु हो चुकी है। और उनके माँ का जो प्रतिज्ञा शर्त था, उसके कारण कैसे सब कुछ पलट चुका था अयोध्या का स्थिति, ये देखते हुए उनको बड़ा दुख होता है। तो फिर हालांकि दशरथ ने भरत को राजा बना दिया था, फिर भी भरत ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्योंकि रघुकुल की ये परंपरा थी कि जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा होता है। अगर भरत चाहते तो राज्य ले सकते थे, सिंहासन पे बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो राम को मनाने के लिए गए, और फिर जब राम नहीं माने तो उनके प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का कार्यभार संभाला और 14 वर्षों तक अयोध्या पे राज किया। तो जैसे भरत ने दो पादुकाएं दी राम को और बोला कि इन पे आप पैर रखिए, और इसी को मैं आपका स्वरूप मान के और अयोध्या का शासन चलाऊंगा जब तक आप नहीं आते। तो ये पादुका जो है एक सिंबॉलिक इसका सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि जब एक नेता एक राजा नहीं होता है तो उसके बदले में अगर कोई शासन कर रहा है, सीधे उन्होंने शासन नहीं लिया बल्कि उन पादुकाओं को उस पे रख के और उसके द्वारा ही, उसके माध्यम से ही शासन चलाया। नंदीग्राम में रह के उन्होंने जो जैसे राम वन में जैसे एक एक साधु के जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वैसे ही इन्होंने भी प्रतिज्ञा किया कि मैं भी जब तक राम वापस अयोध्या नहीं आ जाते तब तक जैसे वो जी रहे हैं ठीक वैसे ही मैं जी के अयोध्या का शासन चलाऊंगा। तो इनसे, भरत के जीवन से हमें ये देखने को मिलता है कि भरत ने धर्म को सबसे पहले रखा। वो चाहते तो अयोध्या का राज्य ले सकते थे, क्योंकि उनके पिता ने उनको दे दिया था, और राम भी इसके लिए कुछ नहीं करते। लेकिन
उनको लगा कि ये अधर्म होगा, क्योंकि बड़े भाई के रहते हुए मैं कैसे शासन चला सकता हूँ। तो धर्म को सबसे पहले उन्होंने प्रधानता दी। और एक भाई का प्रेम, वात्सल्य, ये सब अगर छोड़ भी दिया जाए, अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, तो भरत का ये डिसीजन सही भी था कि राम को मनाने गए और फिर उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने शासन किया। क्योंकि क्योंकि वो अ, अगर राज्य अपने हाथों में ले लेते, सिंहासन ले लेते, राजा बन जाते, तो ये भी संभव था कि जनता विद्रोह कर देती। जब महाराज दशरथ ने पूछा था सभी से कि किसे राजा बनाया जाए, आप सब किस पे सहमत है, तो सब ने, पूरी जनता ने और उनके दरबारियों ने, सब ने राम का ही समर्थन किया था। ऐसे में अगर अचानक से भरत राजा बन जाते, तो ये भी हो सकता था कि विद्रोह की समस्या उत्पन्न हो सकती थी राज्य में, और राज्य ठीक से नहीं चल पाता। तो ये भी उनका एक अच्छा डिसीजन था कि राम को मनाने गए, और फिर एक तो धर्मानुसार भी काम हो गया और एक नीतिगत फैसला भी उनका सही था। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर किसी के पास पावर हो, तो उसका प्रयोग सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल गेन के लिए, निजी हितों के लिए उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि राजा तो जनता का सेवक होता है, और अगर वो खुद को सबका मालिक समझ बैठे, तो कभी सेवा कर ही नहीं पाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ, ऐसे ही। तो अभी का जो सिनारियो है वर्तमान समय में, अगर देखा जाए जिस तरह से नेता काम करते हैं, भ्रष्टाचार, चाहे अकुशलता, और भी बहुत सारी समस्याएं राजनीति में और नेतृत्व में देखने को मिलती हैं। तो अगर हम अ, भारत के एपिसोड को देखें रामायण में और इनसे सीखने का प्रयास करें, तो बहुत ही अच्छे से नेतृत्व कर सकते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, जनता के सेवा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो भरत जी का लीडरशिप लेसन है वो रामायण से प्रेजेंट किया है। मैं आपका, जयश्री जी का और आपके दूसरे को ऑथर महेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। कोई सवाल पूछना चाहता है? ठीक है, हम भी अगले प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं। एंशियंट विजडम एंड एट्रीब्यूट्स फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम द की इंसिडेंट्स ऑफ किष्किंधा ऑफ वाल्मीकि रामायण। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्रीनिवास सरीपल्ले और अनुपमा रायली जी को। Jai Sri Ram, Namaskar. Am I audible? यस सर। यस। Are you able to see my slides as well? यस सर। यस। Thank you. Thank you very much. My name is Srinivas Saripalli. I recently defended my thesis for Masters in Sanskrit at the Arya University under the guidance of Dr. Anupama Riali, who is also present in the session today. And I will be presenting today on the topic of the alliance between Sri Rama and Sugriva, which I see is a model of sustainable strategic partnership. And it actually fits very well in the current context of all the geopolitical tensions. And this is just a small thought. And also, if I may, I would like to quote a small verse from the Bhushana Tika. Shri Ramayana Rajasya Samarpya Manimekhalam Sarodharamimam Haram Arpayishyami Samprati. So it is a small token of presentation. So let me quickly move on to my next slide. So I have a total of around 10 to 12 slides. I'll quickly dwell on those. So in the current context, we are talking about Sri Rama and Sugriva. Both are two kings in exile.
And both of them have parallel predicaments. In Sri Rama's situation, he is the rightful heir to the kingdom of Ayodhya, who has been exiled to forest, and his wife, Devi Sita, has been abducted. And Sri Rama is Trishu Lokeshu Vishrutaha. He is renowned in all the three worlds. It's not that he is not capable. He is renowned in the three worlds. But he is in a different avatara today. And he's operating without any kingdom. If you look at Sugriva's situation, he is a legitimate king of Kishkindha, but he's been driven into hiding by his brother. And he's living in fear in Rishimukh Parvata. Again, other similarity is his wife also has been forcefully retained in the kingdom by his brother. In Sugriva's case, he possesses the intelligence network, but he lacks the military power. So basically, both are kings without kingdoms, husbands separated from wives. And this is a foundation for alliance. And there is a divine introduction. There is a prophecy by Danu. Vanaradhipaha samarthaha. The monkey king is capable, he tells Sri Rama. So his message, so Danu he's a son of Diti, who has been freed from a curse, and he directs Sri Rama to Sugriva, because Sugriva is the capable one. Sa jnasyati mahavirya tava bharya apaharinam, which means he is the one who may have knowledge, or he can point you to your wife's abductor. Here is strategic significance again. This is a divine validation of the alliance, because it establishes Sugriva's unique capability that he possesses the intelligence network. And it is almost like a destiny and a framework for partnership. And now we see there is an architecture of Sharanagati, seeking refuge. Ramaha Sharanamagataha. Rama is seeking refuge. This is very counterintuitive. In the sacred framework, when he meets with Sugriva, they mention Tasya ayam purvajaha putraha trishu lokeshu visrutaha Sugrivam vanarendram tu Ramaha sharanamagataha. So Rama says, as the eldest son and also being renowned in all the three worlds, Rama has come to Sugriva, who is the leader of all the Varnas, seeking refuge. Now here it is not subordination. We always take the word Sharanagati to mean refuge. But in this case, it is not subordination, but it's like a partnership where Sri Rama honors Sugriva's sovereignty, and there is an obligation, sacred obligation called Sharanagati. It is in all humility, he is asking for an alliance. So this is based on moral, it's a moral framework. And it is not transactional, it is beyond transactions. So it's not commercial in nature at all. And Rama's commitment, his commitment is the promise to eliminate Vali, because upakara phalam mitram, a friend is the resultant fruit of, in this case it is not based on helpfulness. If he helps Sugriva, it is because of the friendship. His pledge is Valinam tam vadhishyami tava bharya apaharinam. I intend to eliminate that Vali who is the abductor of your wife. So there is a comprehensive commitment, but there is no conditions attached here. So Rama does not say that I will do this if you do this for me. He just offers his friendship, and he addresses Sugriva's helplessness, because Vali is invincible. Sugriva can never defeat him. So in this case, there is no clauses here like a contract or anything. It is a personal responsibility that Sri Rama has accepted. Now, Sugriva's counter promise. Here also there is an unlimited commitment. Rasataleva, Nabhataleva, whether in netherworlds or ethereal worlds. Basically, he pledges, saying, Rasataleva vartantim va nabhatale, aham aniya dasyami tava bharyam arindama. Wherever Devi Sita may be, I will bring and offer your wife back to you. So here there is an absolute commitment. Aham aniya dasyami. I will bring and give.
And again, there is no territorial capability limitations. He does not say, if she is here, I'll get her. If she is there, I'll get her. Wherever she is. So basically, he's matching Sri Rama's commitment. So there are two leaders, two kings, who have matched each other's commitments to help each other. So it's a symmetry of reciprocal obligation. It is a balanced structure. Rama's contribution will be military capability to defeat Vali, and he would restore Sugriva to the throne. And he is solving the impossible problem of an invincible enemy. And he is the first one to act. So he is the first one to offer his help. And what is Sugriva's contribution here? He says that he will use his intelligence network to locate Devi Sita. And he would mobilize all the Vanara forces to search for her. And he again solves an impossible problem, unknown location, because Sri Rama and Lakshmana are wandering in the forest, asking everybody if they have seen Devi Sita, who has taken her. So there is an unknown location, and fulfills after restoration to power. So the critical insight is mutual vulnerability, because both need help and they have aligned incentives. Neither succeed unless both succeed. Means the condition is both have to succeed, otherwise nobody will succeed here. So it is a very strategic partnership. And it is based on a dharmic foundation. Vidita now gunaha. So the character-based partnership basically means Vidita now gunaha vidwan Sugrivasya mahatmanaha, the virtues of that great soul Sugriva, because Sugriva is a very, very virtuous king. And this is based, so the virtues are known to us. So the foundation elements is recognition of character. So both have very strong characters and both are great souls. Mutual assessment of values and integrity, which is very, very important. And the trust exceeding any contractual protections. Because currently in the current world, if we see corporations, we'll talk about in the upcoming slides. There is a contract between two companies or corporations or even two countries, and then they try to put all kinds of conditions to help. If this happens, then it will happen, or something like that. So modern parallel is strategic partners require cultural fit and values alignment, not just capability matching. In the test of partnership, Sugriva's delay. So after Vali's death, Sugriva is immersed in joy. He is trying to celebrate, and he forgets momentarily about his side of the bargain, and he delays the organizing the search. And what happens here? The resolution is Lakshmana, Sri Rama's brother. He arrives with a reminder. It's like an enforcement mechanism. Sugriva, you said something and now you have forgotten or you're delaying. Although Sri Rama kept his promise. So Sugriva acknowledges it. That there's a lapse. So he does not say, he acknowledges it. Although he's a king, he does not take it on his, as an ego, or he immediately mobilizes comprehensive search by all the Vanaras. So the partnership here, it survives through accountability, not perfection. Nobody is perfect. There are lapses. People can forget things. So the leadership lesson here for sustainable partnership means mechanisms for addressing non-performance without destroying the foundational bonds. Here, it was a very fine and fragile network. If Lakshmana comes and says something to him in anger, the whole partnership could have actually been broken. But Sugriva also understood it. He did not act with aggression or arrogance. So here is the modern organizational applications in strategic alliances and principles that I think all the world leaders or corporate leaders or anybody should basically take as an example and try to imbibe. An honest acknowledgement of mutual needs. So if there are two countries. The last 2 minutes, please. Thank you, sir. So if there are two countries or two leaders, they should acknowledge that there is a need for the partnership. There should be a comprehensive commitment. Absolute promises carefully made, and character as assessment first. Basically, they should look at the integrity of both the parties and balance reciprocity and accountability mechanisms. And the conclusion, this is like a covenant model at a strategic level, operational level, and a leadership level. Great achievements require strategic interdependence. There should be a Sharanagati framework that creates a sacred partnership obligation, and values and character matter more than capabilities.
At the operational level, all the deliverables with execution autonomy, sequential dependencies managed through trust and accountability, and comprehensive resource commitment where Sri Rama, based on his resources, he knew what exactly he could deliver. So he promised that. Similarly, Sugriva also promised something that he could deliver. At a leadership level, both are vulnerable, both need help, and both need absolute commitments. And that's how maintain resolve through adversity. Dhriti, courage is important. I would close with a small principle here, Rama's leadership philosophy, and where he says, Dhritiman na avasidati, which means the courageous ones never fail. So, vyasaneva, arthakrichteva, bhayeva, jivitantage, vimarshan vai swaya buddhaya dhritiman na avasidati. In times of calamity or any difficulty, a person who contemplates using his own intelligence and courage, he's never unsuccessful. So this is what is applicable to the partnership. The Rama-Sugriva alliance demonstrates the highest performing partnerships, combining with transactional clarity with it's a covenantal depth. It is a model applicable to strategic alliances, joint ventures, collaborations in all the countries that really want to make progress. With this, I would like to close my presentation and open it for questions. Thank you so much. Thank you so much, Srimaji, for very nicely exploring the Kishkinda episode first, and particularly that partnership aspect, and then correlating it with the modern management aspects. So, really, thank you very much for presentation. Thank you, sir. Thank you. Any questions, please? So, thank you. Now, And last but moving on not to the the least, I would like to thank my guide who is also present here, Dr. Anupariali. Thank you so much for her guidance. She's a professor and in the MIT University there, and she's also visiting faculty here for Arya University. Thank you so much. Thank you. So, next presentation is on the marketing strategy reflected in the Valmiki Ramayana with the reference of Balkanda. Rahul Sadgar, please go ahead with your presentation. Hello. Yes. Huh. Yes, Rahulji. Sabhaye Namaha Sabhajanescha Namo Namaha. I am Rahul Sharkumar Sadghar from Mumbai. I am reading this paper, a marketing strategy reflected in Valmiki Ramayana, a study of the Balakanda. These days, every product requires marketing either for the promotion or for the best sell in the society. This research paper will try to find out some marketing skills of ancient India, especially for the promotion of Valmiki Ramayana. What kind of strategy poet used in Balakanda for the marketing of epic Ramayana? This research paper that is the creation, endorsement, and process of the Ramayana by figures like Narada, Brahma, Valmiki, and twin singers Kusha and Lava are deeply aligned with modern marketing principles, including product definition, target audience identification, major crafting, channel selection, and securing audience feedback. Then the paper will proceed by defining the marketing concepts used, detailing the marketing communication process as reflected in the Balakanda, analyzing the character building strategy for Lord Rama, and finally examine the canto-wise structure as a promotional teaser and trailer framework. First of all, definition, concept, and measurement of marketing in the epic. Advertising and marketing, as defined as many forms of non-personal presentation and promotion, including informing potential customers about the product, or in the concept of epic Ramayana at its central character, Lord Rama. Concept of marketing. In Ramayana, the objective is to influence the listeners and readers by imparting the virtuous life and deeds of Lord Rama, thereby promoting Dharma and the epic itself.
Then coming to marketing impact is measured through reach, refers to the number of people exposed to the marketing. In the Ramayana case, Lord Brahma prophecy highlights the ultimate reach, establishing the product, eternal success, that is Yavasthasyanti Girayah Saritasya Mahitale, etc. The frequency measures how often the audience sees, in the case of in this case, reads or listen to the story. In the Balakanda, repetition, that is such as threefold singing by Kusha and Lava mentioned in the Canto 4. Thrice a time they have presented this Ramayana. Marketing communication process and the Valmiki model, that is also important. Identifying the target audience, and target audience is sages in the hermitage. First of all, Kusha and Lava presented this Ramayana in front of the sages of the hermitage after learning it from Valmiki. Then they have presented this Ramayana again in front of the Ayodhya subject, and afterwards they came to the court of Rama. So they got a good publication over there, good presentation over there, and they have presented the thing. A key example of demo, that is also very important, that says ki the main words, that is ma nishad, that the words Valmiki utterance of these words motivated by Lord Brahma, and the immediate repetition singing by these people. When he uttered that verse ma nishad, then Brahma motivated him to utter it again and again, and then he got the influence of that meter. Then he presented the whole Ramayana in that meter, that is the Anushtuk. The poetic innovation and its choice of narrative style is a long poem, further mass epic, unique and memorable for the people of era till today. Then crafting the message, that is a value proposition. The value from this in Balakanda itself, in the verses 90 to 97, we are getting the importance of the king is highlighted through the examples of Lord Rama, establishing him as an ideal product itself. And obviously, after using this product, what kind of benefits we get? That is a Patana Phala, that is also described in the verse 98 and 100. That is also sarva papai hi pramuchyate. When we are using a certain particular product, that is also very important. Why we are using this product? So the phala is given sarva papai hi pramuchyate. Then encoding the message. The encoding involves converting the crafted message into a suitable format, which must be very clear, concise, and easily understood. And for that, obviously, as we know, the oral message is encoded into the poetic way, written and musically. That is a druk or shravya. So we are getting first of all shravya and then afterwards druk shravya. The epic is composed in the Anushtup meter. So product is presented in that particular meter, and overall we are getting 24 and more verses, or 24,000 and more verses over there. Then Brahma said to Valmiki, that is Sarga 2, that is a divine structure for composition. Then Valmiki said to, or they taught to Kusha and Lava, that is a teaching of the epic in a musical format. So that is also very important when we are going to present the product, in which way we are going to product, or which way we are going to present that product. That is also important. Then selecting communication channel, as I said, that is a Shravya Madhyama, it was shown. Then feedback, which is very, very important. As we know, Valmiki uttered that words Manishada, then repeatedly he uttered with his pupils, then he got motivation from the Brahma, then he on the order of, or getting motivation from the Brahma, he composed the whole Ramayana, then he taught it into his hermitage, including Kusha and Lava. So that is always important. That is also presented in the Sarga 4. Feedback in the audience response in Sarga 4, the performance of Kusha Lava is garnered
two key instances of feedback. First, the story was loved by sages. वहां से उनको वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि हाँ अच्छा हुआ है करके. So Kusha and Lover got motivation in that hermitage only from all sages. Then after their presentation in the hermitage, they went to Ayodhya and they have presented again that Ramayana in front of Ayodhya subject, and they when they got a fame over there in the Ayodhya, then they came to royal court of Rama, and that was the third time of their presentation. That is also important. Then communication mix and strategy in the Balakanda, that is also given over there. The marketing communication mix is an essential aspect of company's promotional strategy. The Valmiki Ramayana utilizes these components through poetry and music. And the outdoor advertising of this Ramayana is, which is very interesting, that is the create awareness. So Narada to Valmiki, then Brahma to Valmiki, then build the brand image of that, obviously, of Lord Rama, who is presented as a leader of ethical governance, and the encourage consumer behavior, that is also important one, by reading a large audience quickly. We are here because of we are having an impact of that product, that is epic Ramayana. Then sales promotion. Sales promotion involves short-term incentives to encourage consumption. Initial conversation between Narada and Valmiki serves a biography of King Rama. Then public relation, that is a PR. PR involves building a positive image among various publics, and the very act of composing epic based on sages Narada, and we are getting a high credible positive image of this product of this Ramayana. Then direct marketing in the Sarga 4, the direct feedback from the satisfied customers, sage Valmiki himself. He got satisfaction कि भाई मैंने जो किया बहुत अच्छा किया. Right now I'm ready to teach it. Sage Valmiki himself, then sage in the hermitage and the subject of Ayodhya. And the last, Canto wise marketing, that is a teaser and trailer. Canto 1, that provides information and a character description of Lord Rama. Then Canto 2, Brahma teaches Ramayana in brief to Valmiki. So यहाँ पर वो थोड़ा सा biography देते हैं about the Rama, that is important. Then confirming the product's divine greatness, and the Canto 4, which is very important, the repeated singing of Kusha and Lover serves as an official teaser and trailer, and afterwards they are completing that Ramayana in front of Rama. So पहले राम कैरेक्टर बिल्डिंग, फिर उसके बारे में मोटिवेशन लेकर रामायण लिखना, सुनाना, फिर वो हर्मिटेज में सुनाना, फिर वो अयोध्या के लोगों के सामने सुनाना, ऐसे करके करके सी वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी from that Balakanda, and this is my perception, or which I found. Thank you very much. Wow. Thank you. Thank you, Rahulji, for exploring the very different aspect of marketing from the Balkanda. Thank you In very much. Mumbai, So very because good. we used to teach marketing skills to degree college, so I thought ki we should get it from that. Very nice. Yes, thank you. Thank you. Now, nextly, we have presentation रामायण में मानवीय मूल्य के रूप में पुरुषार्थ, स्नेहलता जी कुसुम। शुभ संध्या। आभासीय पटल पे जितने विद्वान जन हैं उनको मेरा प्रणाम। मेरा शीर्षक है रामायण में मानवीय मूल्य के रूप में पुरुषार्थ। मूल्य की जब हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल सरल लगता है, लेकिन वह गहन है। उस पे आज भी चिंतन चल रहा है कि आखिर हम मूल्य किसको कहें। अगर हम मूल्य को सामान्य भाषा में अगर परिभाषित करें तो मूल्य मानव जीवन को दिशा प्रदान करने वाला आदर्श है,
जबकि जब हम उसे गहन रूप में अगर देखते हैं तो वह क्या है, वह ऐसा प्रतिमान है जिनके आधार पर मनुष्य अपने व्यवहार को सामाजिक दायित्वों के बीच में व्यवस्थित संतुलन बनाए रखता है। अगर हम इसे और भी सरल रूप से कहें तो कहें हमारे विकास की, नैतिकता की और धार्मिकता को जो आधार प्रदान करता है वह मूल्य है। तो मानवीय मूल्य मानवता के संपोषक होते हैं और इनका अनुपालन करके ही सभ्य समाज आगे बढ़ता है। यह मानव को स्वस्थ और सम्यक विकास में मदद करती है और यह जो मानव मूल्य है वह हमेशा समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसका स्वरूप, जो उसका भूमा स्वरूप जो होता है वह हमेशा एक जैसा बना रहता है। अगर हम भारतीय इतिहास में देखें या रामायण को अगर देखें तो रामायण जो है वह क्या है, पारमार्थिक भावनाओं को औ- और मूल्यों के दोनों का समान विकास हम इसमें देखते हैं। क्योंकि जो रामायण है उसमें आपको नैतिक आधार भी मिलता है, सामाजिक आधार भी मिलता है और धार्मिकता भी मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानवीय मूल्यों के विकास में जो उचित मार्गदर्शन रामायण हमारा करता है। अगर हम यह भी देखते हैं कि जो आदर्श जो होते हैं, आखिर हमें आदर्श क्यों की आवश्यकता क्यों होती है? आई एम ऑडिबल सर? जी जी, बोलिए, ऑडिबल है। हाँ, हम अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो आखिर मूल्यों से हमें क्या प्राप्त होगा? तो कहते हैं कि अगर कोई विकास दोनों तरह से होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों। अगर आपका आंतरिक विकास अगर सही होगा तो हम बाह्य विकास भी कर सकते हैं और वह भी सुदृढ़ता प्रदान करता है आपके वाय विकास को। तो इस विकास के रूप में अगर हम मूल्य की जब बात करते हैं तो सबसे जो प्रथम मूल्य के रूप में आता है तो वह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ एक ऐसा है जो जीवन के हर एक लक्ष्य में, या कह सकते हैं जीवन जीने के लिए या जीवन यापन करने के लिए आपको वो सामर्थ्य प्रदान करता है। वह आपको बताता है कि हम किस प्रकार से चले, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, वह हमको पुरुषार्थ से ज्ञात होता है। अगर पुरुषार्थ के को अर्थ को देखें तो पुरुष, पुरुष यानी मनुष्य जो इंद्रिय और मन का संघात है। और जब हम अर्थ के रूप में करते हैं तो प्रयोजन, तो वह जो मनुष्य के उद्देश्यों का प्रयोजन की सिद्धि करता है वह पुरुषार्थ होता है। और जैसे कि यहाँ जितने लोग मौजूद होंगे ये सब जानते हैं कि पुरुषार्थ जो है वो चार है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ऐसा नहीं है कि ये पुरुषार्थ जीवन के मूल्य में कभी भी इसका औचित्य खत्म हो सकता है। तो रामायण के के परिप्रेक्ष्य में, या कह सकते हैं रामायण के रूप में, हमने पुरुषार्थ को लिया है ताकि हम दिखा सके कि वाल्मीकि रामायण में पुरुषार्थ की सिद्धि कैसी होती है। तो वाल्मीकि जो पुरुषार्थ जो है वो उसमें सारे अगर आप पात्रों को देखेंगे तो सब में एक प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि आपके सारे पात्रों में दृष्टिगत होता है। वाल्मीकि रामायण में राम जहाँ नायक है, अगर हम रामचरितमानस में देखते हैं तो वो ईश्वर का रूप लेता है, वह आदर्श और विश्वव्यापी रूप में प्रकट होता है। तो रामायण मानवीय मूल्य और राम राज्य का आदर्श दोनों की अभिव्यक्ति करती है। और जहाँ हम यह भी देख सकते हैं कि वो नैतिकता के भी नायक हैं। अगर हम सबसे पहले अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म के लिए एक श्लोक है कि धर्मार्थ प्रभृति धर्मेश धर्मे प्रभवते सुखम, धर्मेन लभते सर्वधर्मसारमिदः जगत। यानी धर्म से अर्थ लाभ होता है, धर्म से ही काम की प्राप्ति होती है, धर्म से सब कुछ प्राप्य है। अतः जगत की एक सारभूत वस्तु है तो वह धर्म है। वह धर्म ही है जिसके द्वारा हम सब चीज की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो इस तरह से देखिए कि मूल्य व्यवस्था के रूप में धर्म जो है वह केंद्र भाग में है, या यह कहें वह केंद्र भूमिका निभाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि धर्म जो है वो ध्री धातु से उत्पन्न हुआ है, जो कहते हैं कि धारयति इति धर्म, यानी वह वस्तु जो जिस, या कह सकते हैं कि वस्तुओं का जो अस्तित्व बनाए रखे, उसे हम धर्म कहते हैं। तो हम जब बृहदारण्यक और या छांदोग्य उपनिषद में देखते हैं तो वह आचरण के रूप में आया है, और जब हम तैत्तिरीय उपनिषद में देखते हैं तो वहाँ सॉरी हम थोड़ा सा वो कर दिए, तो हम जब छांदोग्य उपनिषद में देखते हैं तो वो कर्तव्य के रूप में आता है, जब हम तैत्तिरीय उपनिषद में देखते हैं तो वो आचरण के रूप में आता है। लेकिन जब हम रामायण में धर्म को देखते हैं तो धर्म जो है आत्मिक मुक्ति का साधन है। तो धर्म के अनुपालन से शारीरिक और आत्मिक कल्याण होता है। जिस प्रकार एक बहारिया एक पति के वश में होकर धर्म का पालन करती है, प्रियतमा बनकर के काम की, और पुत्रवती होकर अर्थ का संपादन करती है, उसी प्रकार एक धर्म फल की प्राप्ति होने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करता है। इसलिए धर्म जो है त्रिवर्ग में सबसे प्रथम आता है। तो धर्म जो है, अगर हम रामायण कालीन धर्म को देखें तो रामायण कालीन धर्म में हम देखते हैं कि वो क्योंकि वैदिक युग के तुरंत पश्चात था, तो इसलिए हम उसमें देखेंगे कि यज्ञों और कर्मकांडों का भी हमको अ, पूर्ण अनुगमन करती है। यानी शास्त्र में जितने यज्ञों का उल्लेख किया है, आपको वैदिक काल में जितने भी यज्ञ अनुष्ठान जितने भी दिए गए हैं, रामायण का काल में आपको वो सब मिलेगा। इसका एक उदाहरण इस प्रकार से है कि भरत जब कहते हैं कि मेरा राम के वन जाने में, वो कौशल्या के सामने वह शपथ खाते हैं कि अगर मैं उन सब शास्त्रों का अनुगामी ना रहूं, अगर मेरे राम के वन जाने में अगर कुछ भी, अगर कोई भी हाथ हो, तो इस तरह से यह ज्ञात होता है कि उस समय शास्त्र का अनुगमन करना, शास्त्र का ज्ञान होना अपने आप में एक संपन्नता थी, और धर्म के मार्ग पे लोग चलते थे, शास्त्र का अनुगमन करते थे। धर्म रामायण काल में नैतिकता भी धर्म का अभिन्न अंग था। उसमें सदाचार, सत्य, कृतज्ञता, आपको सब कुछ प्राप्त होता है। सदाचार का जो है वो धर्म का एक अभिन्न अंग माना जाता है। आप अगर हम देखते हैं तो सदाचार का तो पूरा अयोध्या कांड अगर हम पढ़ें तो सदाचार तो बिल्कुल एक एक श्लोक में आपको पता चलेगा। एक जगह जो दशरथ जो है अपने वचन के कारण अपने प्रिय पुत्र को वन भेज रहे हैं, एक जगह यहाँ यह होता है कि लक्ष्मण बोलते हैं कि अभी अयोध्या के किसी मनुष्य को पता नहीं है कि आपको वन जाने के लिए पिता ने कहा है, तो आप ऐसा जी, करें। आखिरी आखिरी मिनट, क्या सर? 2 मिनट में आप खत्म कीजिए। तो इस प्रकार देखते थे काम, अर्थ और मोक्ष, सभी चीजों का संतुलन जो है हमको रामायण काव्य में प्राप्त होता है। अगर हम इस तरह से देखें, अर्थ की बात करते हैं तो वह लक्ष्मण कहते हैं एक संवाद में कि अर्थ तो जिस प्रकार सारी नदियां एक समुद्र में जाके मिलती है, उसी तरह से अर्थ से सारा कार्य संपन्न होता है। और काम के लिए तो यह है कि काम जो है, काम के लिए रामायण में यह कहा गया है कि स्वयं अपने वहां काम प्रेम के रूप में भी प्रतिष्ठित हुआ है। भार्या के साथ अपने औरस पुत्र, यानी कहने के अपने नजदीकी लोगों के साथ विवाह संबंध ना करना, और काम के प्रति जो वहां रामायण काल में जो कहा गया है कि वह आध्यात्मिक और भौतिक ऊर्जा दोनों है। मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष जो पारंपरिक रूप में दिया गया है, मोक्ष बिल्कुल वैसा ही है। आप जटायु, सबरी, इन सब में मोक्ष का ज्ञान जो है राम के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन मोक्ष का जो कंसेप्ट आज के भारतीय दर्शन में है उस प्रकार का वहां नहीं मिलता है। वहां पे राम कहते हैं जो नैतिक आचरण संपन्न करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम रामायण में देखते हैं कि
हमें सबका संतुलित या कर सकते हैं पुरुषार्थ का संतुलित रूप रामायण में दिखता है और वह कल्याणकारी है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम संतुलन की बात करते हैं, क्योंकि आज हमें जो चाहिए वो सबसे बड़ी अगर जो चीज चाहिए आज सारे युवाओं में वह संतुलन, कि हम धन के लोभ में भागते न रहें, हम सब में संतुलन बनाए, ना काम के पीछे जाए ना अर्थ के पीछे जाए। हमारा जो भी कार्य हो वो धर्म के मर्यादा में। स्नेहलता जी प्लीज आप कंक्लूड कीजिए, धन्यवाद सर। का समय हो गया है, प्लीज। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग धर्म और मानवीय मूल्यों को रामायण के बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले मैं जस्ट एक पूछना चाहता हूँ वेदर गौरी देसाई हैड जॉइन द मीटिंग। गौरी देसाई, क्या आप हो? नो, ओके। The next presentation is Political Aspects of Ramayana by Mrunmayi Kanetkar and Harshali Pauli. Yes, Mrunmayi, please, ma'am. Yes. Namo Namaha. Myself, Mrunmayi Kanetkar, President, Khandesh Education Society. I will be presenting the paper based on the topic Political Aspects of Ramayana. This paper is also co-authored by Harshali Nilesh Pove from Dharohar. She actually has some major network issues, so I will be proceeding with the presentation. The paper examines the political aspects of Ramayana with a specific focus on alliance building as an ethical instrument of the statecraft. The scope of the research, rather than treating the epic purely as a religious or moral narrative, the study approaches it as the text that presents a coherent political vision, where political objectives are achieved only through righteous means. The paper deliberately narrows its scope to examine how alliances, that may be dynastic or moral or military, diplomatic, collectively they enable the liberation of Sita and thus restoration of Dharma. Ramayana, as in Itihasa, it integrates the ethical ideals directed into political life. Kingship here is not merely the administrative power, but also a moral responsibility. This epic, Ramayana, repeatedly affirms that the political authority survives only when it is protected by dharma, which is an idea foundational to the Indian political thought. The political vision of Ramayana prioritizes ethical legitimacy over the brute strength. Diplomacy, counsel, and consensus, these all the concepts appear repeatedly, suggesting that Rama's leadership model is one where political success flows from the moral credibility and not by any kind of fear or domination. Now, alliances as the political strategy. Alliances were considered as the conscious political choice, where it included all the different species like humans, Vanaras, and Rakshasas as well. We can see the alliance with Vanasena, alliance with Vibhishana. Also Ramayana at times includes the mentions like Raja no Bahu Mitrashtra in Kishkinda Kanda, where it is told that kings have many mitras. Importance of ally has also been at times mentioned in Ramayana. Coming next here, the paper turns it to a central argument, alliance building as the primary political strategy of Ramayana. Rama's alliances are not opportunistic, they are inclusive, ethical, and reciprocal. Now, coming to the first alliance, the earliest instance of alliance building in Ramayana appears even before birth of Rama, in the relationship between King Dashratha of Ayodhya and King Romapada or Lomapada of Angadesha. Their bond is established through the kinship where Dashratha's daughter Shanta was adopted by Romapada. During the severe drought in Angadesha, Romapada seeks religious intervention, which leads to, through Dashratha's cooperation, to the arrival of sage Rishyashrunga
Shanta and Rishyashringa Vivaha formalizes a political religious alliance which restores the prosperity to Angadesha, which gives a divine sanction for the kingship, and Rishyashringa being Shanta's husband, uh, it gives stability of lineage for Dashratha through the Putra Kameshti Yajna. This alliance includes an early soft power diplomacy where marriage and ascetic sanction function as the ethical political instruments. Then alliance with the sages, the moral authority. Rama's alliances with the sages like Vishwamitra and Agastya established the principle that political authority requires the moral sanction. The guidance given by Vishwamitra Rishi legitimizes Rama's early use of force in protection of the yajnas, which ensures that the violence is exercised strictly under the boundaries of dharma. The council and bestowal of divine weapons by Agastya, it symbolizes the ethical transmission of power. Through these alliances, Rama's actions become collectively sanctioned as political initiatives, political acts rather than personal initiatives, which demonstrates that the government in the Ramayana operates in the constant dialogue with the moral authority. Coming to the next, alliance with Sugriva, it represents a formal political treaty grounded in reciprocity. Sugriva, who was dispossessed of his kingdom, seeks assistance to restore his rule, while Rama requires military support and intelligence to locate Sita. Rama's intervention restores Sugriva's sovereignty without annexation, while Sugriva mobilizes the Vanara forces for Rama's cause. This alliance exemplifies the ethical realpolitik, where the strategic cooperation is achieved without any kind of exploitation or loss of any political autonomy. Alliance with Vanarsena, it is a complete collective political mobilization. The Vanarsena represents the collective political mobilization based on voluntary alliance rather than coercion. The Vanaras participate as willing allies united by shared ethical goal. Leadership here we find is decentralized, with the figures like Hanuman and Angada assuming specific roles. It reflects the delegated governance. It is completely in contrast with Ravana's fear-based military structure, where here the Vanarsena illustrates how moral alignment strengthens political effectiveness and legitimacy. Now, coming to an important point, that Hanuman as envoy, a diplomatic for the ethical diplomacy. Hanuman's mission to Lanka represents the Ramayana's emphasis on diplomacy before any warfare. Acting as an envoy combines negotiation and ethical warning. Even while being the capable of destruction, Hanuman prioritizes dialogue, ensuring conflict, if unavoidable, becomes morally justified. This demonstrates a political ethic where war is a last resort preceded by communication and persuasion. The last comes the alliance with Vibhishana, refuge. The alliance with Vibhishana marks the culmination of Rama's alliance based strategy. Vibhishana, being the defector, is driven by moral conscience, and Rama, instead of political suspicion, accepts him despite being in the opposition and establishes the principle that righteousness outweighs any origin. This act of this act transforms the conflict into a legitimate regime transition. Vibhishana's coronation ensures political continuity and ethical governance in Lanka, reinforcing that Rama's objective is restoration of order, not conquest. Overall, taken together, these alliances form a coherent model of ethical statecraft. Power in Ramayana is decentralized, legitimacy arises from moral consent, and alliances are based on trust and reciprocity. Rama emerges as a ruler who governs through cooperation and ethical restraint rather than dominance. The political vision of Ramayana is distinctive in ethics is distinctive in that ethics and strategy are inseparable.
Dharma is not an idealistic limitation but the very source of sustainable political success. Military victory as well as the political stability both are shown to be dependent on the moral legitimacy. To conclude, the Ramayana represents alliance building as the central mechanism of the political success. From dynastic diplomacy and moral sanction to collective mobilization and ethical regime transition, each alliance reinforces the principle that power separated from dharma is unstable. The epic thus offers timeless paradigm of ethical diplomacy and righteous governance. Mrunmayee, In the Ramayana, last, please conclude in a minute yeah, or two. I'm just concluding. In Ramayana, political victory is meaningful not because it is achieved, but because it is achieved righteously. Thank you. So thank you so much, Mrunmayee, for very nicely presenting the political aspects of Ramayana. Thank you. Thank you. Uh, the next presentation is by Gauri Kulkarni on vision, mission, and values in the Ramayana, a blueprint for modern management. Has Gauri Desai joined? No. So by that way, this is our last presentation for this session. Yes, Gauri. Is my screen visible? Your presentation is not yet visible. It was visible a few seconds back, but it is not visible now. Yes, now it is visible. Go ahead. Okay. Good evening, all. My name is Gauri Kulkarni. Today I'll be presenting my paper named as Vision, Mission and Values in the Ramayana, a blueprint for modern management. This paper shows how the leadership of Lord Rama, as described in the Ramayana, can be understood as a strong model for ethical, purpose-driven, and sustainable management, even in today's organizations and today's business world. In today's fast-changing business world, organizations face many challenges such as leadership crisis, short-term thinking, ethical dilemmas, and many more. And pressure for quick profits also. Modern management often focuses on performance and results, but without strong values. This can lead to long-term problems. This study suggests that solutions to these issues already exist in our Indian classical wisdom or epics, that is Ramayana. This can lead to Ramayana, which provides deep insights into leadership, governance, and organizational values, which are still relevant today. Modern challenges need for ethical leadership. The Ramayana is usually seen as a religious epic. However, it can also be read as the management and leadership guide. It discusses important aspects such as governance of Ayodhya, succession planning, teamwork, conflict resolution, ethical decision making, and many more. Events like the administration of Ayodhya and planning of Lanka expedition clearly show how strategic thinking and ethical governance model
and value-based leadership, which are core ideas in the modern management. Talking about the vision in Ramayana, here I have mentioned a vision in the Ram Rajya and modern parallel, which is today's corporate world. In management, vision means a clear idea of where we want to go in the future. Lord Rama's vision was Ram Rajya, a society based on justice, equality, prosperity, social harmony, and ethical governance. This vision was not only for the power of wealth, power. This vision was not only for the personal power, but for the wisdom of his people and society. Even during exile, Rama remained committed to the vision, showing clarity, patience, and long term thinking qualities expected from modern leaders. Mission Dharma in action. Mission explains how the vision is put into an action. Rama's mission was to uphold dharma, restore justice, serve society, and not only self. Today's leadership style also explains similar qualities like duty. The leader should be duty oriented. Project should be done by ethical means and not shortcuts. Now, vision. Next, the step was mission, and mission is usually described as action taken to achieve your goal or your vision. Here in Ramayana, it is clearly explained by Rama how using clear vision, clarity, patience, and long term thinking can help us achieve our goals. Rama's mission was to uphold dharma through right action, not through force or selfish goals. Whether in exile or during the war, his actions were guided by duty, responsibility, and service to society. This is similar to modern organizations that align their daily operations with the mission and their ethical goals. Also, the corporate social responsibility could be a part of this. Next, strategic leadership and teamwork. One of Rama's greatest strengths as a leader was his approach to teamwork. He formed alliances with Sugriva, trusted Hanuman, and respected the abilities of his team members. He encouraged consultation and listened to advice, which reflects participative leadership. This approach is similar to modern strategic leadership models that focuses on collaboration, delegation, and stakeholder involvement. Next, values. Values are the moral foundation of any organization. Rama consistently followed values such as truth, service, balance, integrity, and fairness, even in difficult situations. Ramayana, it is mentioned that Satya, which is truth, Seva, which is service, Samatva, which is balance, integrity, and fairness. These were the core values followed by Rama during the Ramayana period. Next, in modern equivalent to that, modern corporate governance also follows similar values, which are corporate ethics and governance standard. In Ramayana, Rama never chose unethical shortcuts and always accepted responsibility for public welfare.
This type of value-based leadership connects strongly with modern ideas like corporate ethics and governance standards. When we compare Ramayana with modern management theories, we find strong similarities. Dharma relates to corporate governance, Seva to servant leadership, and Samatva to emotional intelligence. Rama's leadership also matches the balanced scorecard approach, where vision, strategy, and values are aligned to achieve long term success. Moving to the next slide. Now we'll see what is the contemporary relevance of Ramayana and its values in today's corporate world. Today's business world often focuses on short term profits or instant profits. The Ramayana offers a different idea, purposeful leadership, where ethics and social welfare are equally important. Organizations like Tata, Infosys show how that value-based leadership builds strong trust and long-term sustainability. Many scholars also recognize Indian epics such as Ramayana as early source of organizational behavior and leadership theory. To conclude, the Ramayana provides a timeless framework for management through its strong focus on vision, mission, and values. Lord Rama's leadership showed that ethical clarity and purpose-driven action led to sustainable success. Modern organizations that adopt these principles can develop responsible, resilient, and visionary leaders. Hence, the Ramayana is not only a spiritual epic but a timeless manual of leadership and management. Thank you for your time and attention, Shri Ram. Thank you, Gauri, for presenting various aspects related to management as vision, mission, and values, and correlating is with the modern management. Thank you very much. Please close your screen. Please close your presentation. Yes. Gauri Desai, are you there? Gauri Desai. Okay, I think she has not joined. So we have completed all the presentations for this session on management lessons from Ramayana. And we started with the senior professors, the very senior people from the IKS domain, Ramayana domain, and we ended up with the undergrad student presenting the Ramayana aspect. So it was a very mix of the presenters, and on the same way, very mix of the topics, right from the lessons in the finance, governance, psychology, to the leadership lessons, uh, to the values, then the mission aspects, and the one was on the marketing aspect, the political aspects of the Ramayana. So thank you each one of you for joining the session. Thank you very much. And the next session, we will continue. The next session is on the 8:15. So please rejoin on 8:15 for the next presentation session. Thank you very much, all of you. Jai Shri Ram. Dhanyavad. Jai Shri Ram, Rahul ji. Thank you very Jai Shri much Ram. for conducting this session in a very extraordinary manner, in a very timely manner. So we missed one presenter, Gauri Desai. Other than that, all speakers, I listened to everybody. So thank you for your presentations. एंड टू द ऑडियंस जो आप आज आए और सबको सुना, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज का अपना जो शेड्यूल है उसके हिसाब से वी आर सपोज टू फिनिश एट 8:15 PM और अभी भारत में मेरे ख्याल से 8 बजकर
1 मिनट हुआ है। तो चूंकि अगला सत्र हमने 8:15 रखा है, तो आई थिंक यही शायद उचित है कि हम थोड़ा सा 10 मिनट का विराम ले लें। हाँ, जूम लिंक को बंद नहीं करते, जूम फुल लिंक को चालू रखते हैं। हम लोग आपस में गपशप भी कर सकते हैं, बहुत दिनों से गपशप का मौका नहीं मिला, राइट। और लाल साहब कहते हैं कि आप होते हो तो हम गपशप नहीं कर पाते, तो मैं चला जाता हूँ 10 मिनट के लिए ताकि आप गपशप कर सकें। तो so next up to 8:15 we take a little break and we can chat ourselves. अलका जी का आपका स्वागत है। अलका जी जुड़ गई हैं, ये अगले सत्र की अध्यक्षा हैं। जैसे अलका जी आपको ज्ञात है कि ये सत्र तो समाप्त हो चुका, जी पर जी अगला सत्र 8:15 रहे थे हम। तो जी अगले 10-15 या 12 मिनट जो विशेष हैं उस हाँ पर थोड़ा सा हम कहते हैं, मतलब लिंक को हम बंद नहीं करते, जूम मीटिंग चलते रख देते हैं जी और जी। ठीक 8:15 पे आरंभ करते हैं। पे इसको अगला सत्र शुरू करेंगे हम लोग। हाँ, तो अलका जी अगला सत्र की अध्यक्षा हैं। पर मेरे लिए कोई प्रश्न आपका इस हाँ अधिवेशन को लेकर, या कोई और मन में आपके बात हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं 5 आपने सबसे सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो बाकी सभी मित्रों को तो पता ही है कि अभी तो ये हमारी पिक्चर अभी आधी है। अभी तो कल भी प्रस्तुतियां हैं और परसों भी हैं। और इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है रामायण के अधिवेशन के लिए, एक बहुत बड़े हर्ष की बात है। कुछ समय से राम जी की बात तो बहुत होती है, पर मेरी दृष्टि से ज़्यादातर दिखावा और प्रोपोगंडा और पर्सनल पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए होता है। यहाँ पे लोग सब अपना मन से अध्ययन करते हैं और आके अपने विचार प्रकट करते हैं। ये बहुत आनंद की बात है। तो कल का सेशन 7 बजे शुरू होगा, कल और परसों। उसकी जानकारी मैं फिर पोस्ट करूँगा। और कल 9 बजे है हमारा, हर महीने हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। शनिवार को, प्रथम शनिवार को। इस साल इस महीने अपवाद है, दूसरे शनिवार कर रहे हैं। तो 9 बजे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा, उसके बाद में भगवान विष्णु के कुछ नामों पर चर्चा होगी। तो कोई प्रश्न मेरे लिए किसी का, आपका? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जरा 10 मिनट के लिए विराम लेता हूँ। और आप लोग बातें करिए जैसा आपका ठीक है। कल का सत्र, सभी को नमस्कार। कल का सत्र 6 बजे से रहेगा कि 7 से? अभी रामायण जी जी 7 बजे सर से। ने अनाउंस किया 7 बजे हाँ, से 7 रहेगा, बजे। 7 o'clock। हाँ, हाँ, कल 7 से है। हाँ, तो थोड़ा सा मैंने देखा पूरा कैलेंडर, से अभी थोड़ा सा अब आपको 7 बजे का है, 7 से 8:30 तक रहेगा कल का सत्र। ठीक ठीक। और कुछ? ठीक है, चलिए मैं 10 मिनट मिलता हूँ आपसे। जय श्री राम। इसको खत्म कर मारती हूँ उसको। कैलेंडर स्नो है। जनवरी, 9 जनवरी है आज, कल 10 जनवरी।
Yeah, just testing my audio. I hope I'm audible. Yes, you are audible. We can hear you. Thank you.
स्मिता कुमारी जी हैं क्या? स्मिता कुमारी जी, शंकर वेंकट नारायणन और उमा शंकर, एनीबडी हियर? शंकर, let's see. Yeah, Yes, Ji. Shankar. Yes, I'm there, sir. I see you. Thank you, Uma ji. yeah, but mine is over yesterday itself. Uma Shankar. No, I see you, but ma'am. Yeah. Shankar is, I'm Shankar Venkat Narayan. I'm here. You are both co-authors, sir, right? And Pratik Khanna ji, are you here? I can see him. I think Smita Kumari is still not visible to me. I think everybody else is here. Okay. चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारा ये आज राम राज्य पर का सत्र है, और जो अभी इस समय भारत में 8:15 बजे, 8:15 से 9:30 तक का समय है। तो इस सत्र में पांच पेपर हैं, और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आदरणीय श्रीमती अलका प्रमोद जी को आमंत्रित करता हूँ, जो इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि संभव हो तो अपना वीडियो पूरे समय ऑन रखें, तो बड़ा अच्छा लगता है, सब आपके दर्शन हो जाते हैं। नहीं तो पता नहीं रहता कि इतना अंधकार क्यों है। तो अंधकार से बाहर आए, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसा कोई है ना श्लोक, हमें तो आते नहीं है। तो इस तमस से थोड़ा सा बाहर आए, ज्योति में आए, आपके दर्शन हो, बड़ा आनंद हुआ। चलिए, सब कृपया वीडियो ऑन रखें जहाँ तक संभव हो। कई बार संभव नहीं हो पाता। तो जय श्री राम, और अलका जी आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय ओम जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सबको हमारा राम राम। आज के इस सत्र में मैं सभी वक्ताओं का और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 11, 12, 13 दिसंबर को हमारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन IIT रुड़की में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन सब लोगों के लिए वहां पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए 6 जनवरी से हम लोग पुनः उसी क्रम में ऑनलाइन अधिवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज 9 जनवरी का ये अंतिम सत्र है। एक बार मैं पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ, और आज का विषय है इस सत्र का राम राज्य। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जी हाँ, राम राज्य एक आदर्श मापदंड है किसी भी शासन का।
राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक किसी भी दृष्टि से विश्लेषण करें तो राम राज्य आदर्श के मापदंड पर खरा उतरता है। और जब भी किसी आदर्श राज्य की कल्पना की जाती है, हजारों वर्ष पहले राम राज्य हुआ था, लेकिन आज भी राम राज्य की ही कल्पना की जाती है। चलिए आज हम अपने शोध के विद्वानों, जो हमारे आज के वक्ता हैं, उनके शोध पत्र के माध्यम से राम राज्य के विषय में उनके विचार जानते हैं। तो यदि स्मिता कुमारी जी यहाँ पर उपस्थित हो तो कृपया अपनी उपस्थिति बताएं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर स्मिता कुमारी जी, स्मिता कुमारी जी संभवतः अभी जुड़ नहीं पाई हैं इससे, और इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और श्री राहुल अनंत कुलकर्णी और मंदार महेश्वर राव कुलकर्णी जी उपस्थित हैं क्या? जी मैडम। जी, तो आपका सादर स्वागत है, यहाँ अभिनंदन है। आपका विषय और लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि राम राज्य और आधुनिक सुशासन है। तो आइए और अपने विचार प्रस्तुत करिए। नमस्कार। राम राज्य और सुशासन इस विषय पे मैं कुछ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमको सबको पता है कि राम राज्य की जो अवधारणा है, ये भारतीय संस्कृति में राम राज्य आदर्श शासन व्यवस्था के प्रतीक है। भगवान श्री राम को धर्म का साक्षात रूप कहा गया है और उन्होंने ऐसा शासन चलाया जिसमें न्याय, समानता, नैतिकता और लोक कल्याण सर्वोपरि थे। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भी सुशासन का अर्थ पारदर्शी, उत्तरदायी, न्यायपूर्ण और लोकहित केंद्रित शासन चलाना है। राम राज्य और आधुनिक सुशासन की मूल भावना हम देख सकते हैं कि समान है। दोनों ही जन कल्याण और न्याय पर आधारित है। दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज्य नहीं कहोगे। राम राज्य में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, दैवी या भौतिक कष्ट नहीं व्याप्त था। प्रजा सुखी, भय मुक्त और समृद्ध थी। अगर हम राम राज्य में समानता और सामाजिक समरसता की बात करें तो भगवान श्री राम ने कभी जाति, वर्ग या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया था। भेदभाव रहित शासन। उन्होंने निषाद राजगुरु को अपनाया और शबरी के प्रेम को सम्मानित किया। इससे यह पता चलता है कि सामाजिक स्वीकृति भी वहां पूरे अवसर पर थी। समान अवसर थे। यह व्यवहार सामाजिक समरसता और समान अवसर की भावना का परिचायक है, जो इस आधुनिक लोकतंत्र का भी मूल मंत्र है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। राम राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व था उत्तरदायित्व और लोक कल्याण की भावना। प्रभु श्री राम ने प्रजा की भावना का आदर करते हुए व्यक्तिगत सुख त्याग कर यह निर्णय आज लोकतांत्रिक शासन में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के नाम से हम जानते हैं। तो अगर हम इसको कोरिलेट करें तो हमें पता है कि भगवान श्री राम ने क्या क्या त्याग किए और उन्होंने अपनी जनता की तरफ, अपनी जो प्रजा थी उनका ख्याल रखते हुए कई सारे निर्णय लिए। तो आज के लोकतांत्रिक शासन में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एक सर्वोच्च मिसाल है। शासन में कोई निजी स्वार्थ से प्रेरित नहीं था राम राज्य में। अगर हम आधुनिक सुशासन में यूनाइटेड नेशंस के जो यूएनडीपी के जो तत्व है, अगर उस पर बात करें तो वो प्रमुख से है उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, सहमति आधारित निर्णय, कंसेंसस, समानता और समावेश, इक्विलिटी और इंक्लूसिवनेस। तो ये जो मूलतः ये 8 तत्व है
इसमें हम पूरी तरह से देख सकते हैं कि ये सब रामायण में भी हमें पूरेपूर उनको फॉलो किया गया है, ऐसा हम जानते हैं। तो बहुत सरल रूप से हम जो भी अ, आज के इसमें यूनाइटेड नेशंस ने जो भी आधुनिक सुशासन की मार्गदर्शक दिए हैं, उनको पूरी तरीके से राम राज्य में उ- शायद उससे बहुत ज्यादा फॉलो किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो तीन मुख्य बातें हैं, जन केंद्रित शासन, राम राज्य और आधुनिक लोकतंत्र, दोनों ही जो है उसकी नींव है वो जन केंद्रित शासन पर टिकी है। आवाज एक कैसे तरफ वहाँ राजा जो है वो प्रजा का सेवक और रक्षक होता था। आज की में शासन से हम अपेक्षा करते हैं, ये अपेक्षा है, पता नहीं कि हम शायद कितनी अपेक्षा पे वो खरे उतरते हो अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो शासन के सेवक और रक्षक के तौर पर काम करे। दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वो है न्याय और धर्म। न्याय के निर्णय धर्म और नीति के आधारित पर थे, न कि व्यक्तिगत भावनाओं पर। भय, अन्याय और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज ही राम राज्य में लक्ष्य थे, और आज के परिप्रेक्ष्य में भी वही लक्ष्य है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है समावेशी विकास। समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना, ये राम राज्य का भी उद्देश्य था, और आज की परिप्रेक्ष्य में भी ये उद्देश्य है। और ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम ऐसे जानते हैं। जो सुशासन की प्रेरणा हम ले सकते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण है नैतिक नेतृत्व, शक्ति के साथ संयम और दया का संतुलन, लोकहित सर्वोपरि, शासन का प्रत्येक निर्णय जन कल्याण के उद्देश्य से लिया गया है, नागरिक चेतना, जिसमें नागरिकों को शिक्षा, जागरूकता और उत्तरदायित्व राज्य के विकास का अवश्य अंग माना गया है। इसमें अगर हम लोकहित सर्वोपरि इस पर विचार करें, और तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत की जो भूमिका है, विशेष रूप से जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपेक्षा कर रहा है कि कैसे हम बर्ताव करें, कैसे व्यापार में विशेष करके हमारा स्वभाव रहे, लेकिन चाहे हम अभी चर्चा में है कि बहुत 500% टैरिफ तक अगर लगा सकते हैं, अगर रशिया से हम तेल खरीदना बंद कर दें। लेकिन जैसे अगर हमने कई सारे भाषणों में अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी को सुना होगा, तो उनमें हमको पूरी तरह से ये दिखता है कि हमारी भारत की जो स्टैंड रहेगा वो बिल्कुल लोकहित सर्वोपरि रहेगा, न कि केश किसी दूसरे बड़ी शक्ति के दबाव में आके हम कुछ निर्णय करेंगे। मुझे लगता है ये जो यूक्रेन के मामले में जो हमारा स्टैंड है, ये लोकहित सर्वोपरि इसको पूरी तरह से वहां रिप्रेजेंट करता है। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत अच्छा इसके बारे में लिख चुके हैं वो, यदि आज के शासक वर्ग और नागरिकों इन सिद्धांत को आत्मसात करे तो भारत पुनः एक राम राज्य की ओर अग्रसर हो सकता है, जिसकी कल्पना महात्मा जी ने की थी। राम राज्य एक व्यावहारिक शासन सिद्धांत है जो आज भी लोक नीति के लिए प्रेरणा स्रोत है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि राम राज्य आधुनिक सुशासन का एक भारतीय आदर्श स्वरूप है। यह केवल एक धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि शासन विज्ञान का एक उत्कृष्ट मॉडल है, जिसमें मानवीय संवेदनाएं और धर्मनिष्ठा का अद्भुत समन्वय है। तो एक ये छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं सुशासन और राम राज्य के बारे में करना चाहते थे। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आपने तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया राम राज्य का, और आज के जो सुशासन होना चाहिए, जिसकी अपेक्षा की जाती है, वो क्या होती है। और यूएनओ, जैसा कि आपने बताया, यूएन के हिसाब से जो है उसके नियम है भी वही जो लोक हित के लिए हो, और जो राम राज्य की परिकल्पना थी उसी पे आधारित आज के भी नियम हैं। वो बात दूसरी है कि आज उसको हम इतना निभा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज हम कलयुग में हैं, और राम राज्य में उसको सफलतापूर्वक सार्थक रूप से निभाया जाता था।
जो आपने आज उसका एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया वो बहुत अच्छा था। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, आपका तो समय समाप्त हो गया राहुल जी, लेकिन आगे के जो हमारे वक्ता हैं उनको मैं बता दूं कि आपके लिए 10 मिनट का समय है और 2 मिनट जब बचेंगे तो हम आपको एक संकेत देंगे कि अपनी बात को 2 मिनट में समाप्त करिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मेरा पहला था प्रेजेंटेशन, लेकिन नेट के कारण थोड़ा अच्छा, थोड़ी चलिए देर कोई बात नहीं, तो हम आपको बुला लेते हैं। और जी अब मैं स्मिता कुमारी जी को आमंत्रित करती हूँ, जिनका विषय है राम राज्य सतत और समावेशी शासन का आदर्श मॉडल। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्मिता कुमारी जी। मैम, मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ हाँ जी। मैम, शेयर हुआ क्या? जी हाँ, आ रहा है आ रहा है। जय श्री राम। मैडम शुभ आप उसको संध्या। रन कीजिए प्लीज, प्रेजेंटेशन को प्लीज प्रेस F5। ओ जी जी जी। शुभ संध्या। मेरे प्रेजेंटेशन का शीर्षक है राम राज्य सतत और समावेशी शासन का आदर्श मॉडल। राम राज्य केवल एक धार्मिक आदर्श नहीं, बल्कि सुशासन, न्याय, समानता और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस तथा अन्य ग्रंथों में वर्णित राम राज्य का स्वरूप मानव केंद्रित, प्रकृति सम्मत और नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन की अवधारणा प्रस्तुत करता है, जिसकी विशेषता है सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति, जिसमें राज्य की सभी नीतियां प्रजा के हित, न्याय, सभी समान अवसरों पर आधारित हैं। भारतीय संस्कृति त्याग पूर्वक भोग करने का संदेश देती है। राम उसी त्याग आधारित संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, जिनमें यह कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। त्याग वृत्ति वाला शासक ही राम राज्य ला सकता है। राम ने अपना सर्वस्व इसलिए त्याग दिया कि लोग प्रसन्न और सुखी रहें। राम राज्य शासन के उस आदर्श का प्रतिरूप है जहां प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक कोई भी पीड़ा समाज को नहीं सताती थी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम राज नभ घेस सुनु सचराचर जग माही काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू नाही। यह सब सतत और समावेशी शासन, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस की विशेषताएं हैं। महात्मा गांधी ने राम राज्य का आदर्श प्रस्तुत करते हुए भारतीयों को स्वराज पाने के लिए प्रेरित किया था। आज जब सतत विकास, समावेशी शासन और मानवाधिकार जैसे विषय वैश्विक विमर्श का केंद्र हैं, तब राम राज्य की अवधारणा अत्यंत प्रासंगिक बन जाती है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य राम राज्य की ऐतिहासिक, सामाजिक, दार्शनिक और व्यावहारिक व्याख्या करते हुए इसे सतत एवं समावेशी शासन के आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है। राम राज्य की अवधारणा का ऐतिहासिक एवं दार्शनिक आधार। प्राचीन भारत में राजधर्म के रूप में शासन की कला एवं राज्य शास्त्र की परंपरा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य व्यक्ति, समाज, उसके आचार व्यवहार, प्रायश्चित एवं परंपरा आदि का संरक्षण करना था। राजधर्म से विश्व एवं उसके समस्त प्राणियों का कल्याण संभव है। राम राज्य में एक आदर्श शासन व्यवस्था के सभी तत्व सन्निहित थे, अतः राम राज्य के मूल सिद्धांतों एवं विशेषताओं का अध्ययन अपेक्षित है। धर्म और शासन का समन्वय। भारतीय शासन दर्शन में धर्म और शासन का आधार है। राम धर्म के साकार स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। धर्म सत्य की क्रियामूलक अभिव्यक्ति है और सत्य धर्म का सारभूत तत्व है। राम का चरित्र सत्य और धर्म का युगल अधिष्ठान है। धर्मिष्ठः सत्य संतश्च पितुर्निर्देश कारकः
त्वयि धर्मश्च सत्यम च त्वयि च सर्वम प्रतिष्ठितम। न्याय और समानता का आदर्श श्री राम ने धर्म को शासन का केंद्र बनाकर यह सिद्ध किया कि न्यायपूर्ण शासन वही है जो धर्म संगत हो। राम राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, न कोई दुखी होता, न ही कोई भयभीत। तुलसीदास ने लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज में न्याय व्यवस्था पूर्णतः निष्पक्ष थी। सबके प्रेरणापूर्ण राम सर्वत्र प्रेरणा पुंज राम सर्वत्र न्याय की रक्षा में तत्पर दिखते हैं। सीता त्याग प्रसंग इसी बात का प्रमाण है कि शासक को लोक आस्था और नैतिकता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। राष्ट्रहित के समक्ष निज हित का त्याग करते हुए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लोक निरंजन के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले राजा राम की यह प्रतिज्ञा है, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। ये सामाजिक समावेशन के अद्भुत उदाहरण है जिसमें शासन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित था। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने धर्म दर्शन एवं नीति रीति के साथ सामाजिक आचार विचार का सर्वांगीण आदर्श प्रस्तुत किया है। राम मानवता के महान मानदंड हैं। उनकी दृष्टि में संपूर्ण मानव समाज एक समान है। वे सबको समान भाव से देखते हैं एवं सबसे समानता के साथ मिलते हैं। राम राज्य के साथ सतत विकास का दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ है। आधुनिक संयुक्त राष्ट्र की, जैसा कि सर ने कहा इसके पहले, कि ये जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, संयुक्त राज्य ने जो तय किए हैं, संयुक्त राष्ट्र ने 17 गोल्स उन्होंने तय किए हैं, 17 लक्ष्य। उसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन, ये तीनों समाहित है। राम राज्य इन तीनों का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। आर्थिक समृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण था उसमें। राम राज्य में कोई गरीब या भूखा नहीं था। कृषि, व्यापार और श्रम सभी के लिए समान थे। स्पष्ट है कि शासन का उद्देश्य समृद्धि का न्यायपूर्ण वितरण था, न कि केवल राजसत्ता का केंद्रीकरण। अयोध्या नगरी धन धान्य से संपन्न थी। रामायण कालिक समाज एक श्रमजीवी समाज था जिसमें चारों वर्णों के लोग अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तन्मयता के साथ करते थे और प्रजा का उत्थान भी ही राज्य का लक्ष्य था। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति सम्मान भी हर सर्वत्र मौजूद था। राम राज्य की परिकल्पना प्रकृति के साथ सामंजस्य में थी। श्री राम स्वयं वनवास काल में प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे वन देवियों, नदियों, पर्वतों का सम्मान करते हैं, जिससे इको सिविलाइजेशन का आदर्श सामने आता है। वाल्मीकि रामायण इस चेतना का काव्य में प्रकटीकरण है। यहाँ प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि सहचर के रूप में चित्रित है। तुलसीदास भी कहते हैं, फूल ही फल ही सदा तरु कानन, रहि एक सब संग गज पंचानन, भग मृग सहज बयरु बिसराई, सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई। यह राम राज्य तुलसी का एक सुखद स्वप्न लोक है जिसकी कल्पना वे सामाजिक व्यवस्था के रूप में करते थे। इस प्रकार राम राज्य में न केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति भी अनुशासित एवं मर्यादित आचरण करती है। सामाजिक पूंजी और मानवीय विकास। राम राज्य में शिक्षा, धर्म, कला, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का संरक्षण था। मनुष्य का विकास केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति पर आधारित था। अन्याय पर न्याय की अंततः विजय का निरूपण करना रामायण का प्रमुख आशावादी पक्ष है। यह मानवीय जीवन मूल्यों का विश्वकोश है। इसके महान चरित्र अत्यंत प्राणवान और वास्तविक हैं। अनीति का दमन, नीति का उन्नयन, पशुता का विरोध और मानवता का प्रवर्धन, यही राम राज्य का आदर्श है। राम राज्य और समावेशी शासन का तात्विक विश्लेषण भी मैंने किया है। इसमें शासन में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी और समान अवसर राम राज्य में 4 स्तरों पर देखा जा सकता है। राजनीति समावेशन, इसमें मैंने यह बताया कि शासन जो था वो परामर्श प्रधान था। वे मंत्रिमंडल, ऋषियों, प्रजा प्रतिनिधियों और भ्राताओं से परामर्श करके निर्णय लेते थे। यह परामर्श मूलक शासन आधुनिक लोकतंत्र की भावना से मेल खाता है। श्री राम भरत से कहते हैं कि नीति शासनिकों एवं
गोपनीयता का पालन करने वाले अमात्यों की मंत्रणा ही राजाओं का मूल मंत्र है। एको अप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानम राजपुत्रम वा प्रापयेन महतिम श्रियम। राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति, राष्ट्र के प्रति उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, राम इसके उत्कृष्ट आदर्श हैं। राम ने समाज में के सभी वर्गों को एकता के सूत्र में पिरोने की चेष्टा की। केवट को अपने हृदय से लगाकर, वनवासिनी शबरी को मातृतुल्य सम्मान देकर, वंचित शोषित सुग्रीव को न्याय दिलाकर, वनवासी तपस्वियों ऋषियों की आतताई राक्षसों से रक्षा का उत्तरदायित्व निभाकर उन्होंने एक सच्चे राजा होने का कर्तव्य निभाया। राम प्रजा वत्सलता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसमें ये महाभारत का श्लोक बहुत ही यहाँ पर प्रासंगिक है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख संतप्ता नाम केवलम आर्ति नाशनम। श्री राम ने वनवासी, निषाद, सबरी जैसे समाज के वंचित वर्गों को भी सम्मान और समानता का स्थान दिया। यह सामाजिक समावेशन और अंत्योदय की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार अवसर मिले, न कोई भूखा था न बेरोजगार। यह इंक्लूसिव ग्रोथ का आदर्श मॉडल है। राम राज्य का में समाज का प्रत्येक वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने कर्तव्यों में संतुष्ट और परस्पर सम्मान के भाव में स्थित था। तुलसीदास ने अति सुंदर वर्णन करते हुए कहा है, अल्प मृत्यु नहीं कवनयु पीरा सब सुंदर सब विरु शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना न को अबुध न लक्षण हीना। नैतिक समावेशन भी दिखाई पड़ती है। श्री राम की नीतिमत्ता, साधुता और सद्गुण संपन्नता सर्वोपरि है। राम राज्य में नैतिकता शासन की आत्मा थी। राजा से लेकर सामान्य प्रजा तक सभी धर्मानुसार आचरण करते थे। यही मोरल इंक्लूसिविटी की नींव थी। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित हो जाने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री राम के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गए। तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। राम राज्य में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संवर्धन की क्या स्थिति थी, इसके विषय में भी मैंने वर्णन किया है कि वाल्मीकि रामायण में उत्कृष्ट शैक्षिक स्थिति का वर्णन उपलब्ध होता है। सभी द्विजों को शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सत्यवादी, सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत बनाना था। गुरु शिक्षा हेतु ऐसे शिष्य का चयन करते थे जो संस्कारी, सदाचारी, सुयोग्य एवं उत्साही होता। छात्र जीवन में आत्मानुशासन एवं इंद्रियों के संयम पर विशेष बल दिया जाता था। विद्या को तप की तरह अर्जित करना होता था। राम राज्य में नारी की स्थिति क्या थी? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह दृष्टिकोण भारतीय समाज की नारी के सम्मान की प्रतिष्ठा करता है। रामायण इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रचित है। नारी का स्वरूप बहुआयामी है। कभी वह करुणा और त्याग की प्रतीक है, तो कभी नीति, शक्ति और आत्मसम्मान की ध्वजवाहिका। वह परिवार की मर्यादा की रक्षक और समाज की नीति नायिका दोनों है। नारियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। लोगों में नारी के प्रति द्वेष एवं द्रोह, घृणा की भावना का वर्णन नहीं है। नारी को भी घरों में समुचित रूप से शिक्षा दी जाती। श्रौत एवं स्मार्त क्रिया और मंत्रों के विषय में उन्हें समुचित ज्ञान का उल्लेख प्राप्त होता है। साक क्षौम वसना हृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्निम जुहोति स्म सदा मंत्रवत कृत मंगला। नारियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। लोगों में नारी के प्रति द्वेष, द्रोह, घृणा की भावना का वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन कन्या, बहन और अनुज वधु को काम दृष्टि से देखने पर मृत्यु दंड का विधान था। इसलिए श्री राम ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करने वाले लोकाचार से भ्रष्ट कपीश्वर बाली का वध कर डाला। सीता का चरित्र भारतीय नारीत्व की पराकाष्ठा है। वह केवल राम की पत्नी नहीं, बल्कि धर्म की मूर्त स्वरूप है। उनकी भावनाएं, निर्णय और त्याग इस महाकाव्य को मानवीय बनाते हैं। अब मैं अपना निष्कर्ष पढ़ सकती हूँ। राम राज्य केवल एक पौराणिक या धार्मिक आदर्श नहीं, बल्कि एक सार्वकालिक शासन दर्शन है जो धर्म, नीति, न्याय और मानवता के समन्वय से विकसित हुआ। यह एक आदर्श, समतापूर्ण समाज और न्यायपूर्ण शासन का प्रतिनिधित्व करता है। वाल्मीकि विरचित रामायण में प्रचलित मध्यकालीन रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा आगे प्रचारित
राम राज्य की अवधारणा में एक मानवीय दृष्टिकोण अंतर्निहित है जो सदाचार, शांति और सद्भाव पर जोर देता है। यह मॉडल आधुनिक शासन की अनेक जटिलताओं का समाधान प्रस्तुत करता है। नैतिक शासन की पुनर्स्थापना, सतत विकास के साथ सामाजिक समानता, पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण, इसलिए इसकी प्रासंगिकता अक्षुण्ण है। यदि वर्तमान प्रशासनिक ढांचा राम राज्य के मूल सिद्धांतों धर्म, न्याय, लोक कल्याण, समरसता को व्यवहार में उतारे तो एक सतत समावेशी और मानव केंद्रित शासन व्यवस्था संभव है। राम राज्य की भावना से प्रेरित होकर आज भी कई नीतियां भारत में सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। सर्वाधिक तो ज्यादा हो चुका है। ठीक है मैम, तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यदि हम अपने समृद्ध भारतीय परंपरा और मूल्यों को व्यवहार में उतारना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को हर रूप में, हर स्तर पर बनाए रखना होगा। यही रामायण और उसके राम राज्य का सच्चा संदेश और आधुनिक नेतृत्व के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है। जय श्री राम। बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया है स्मिता जी। और ये जो धन्यवाद राम मैम। का सतत विकास और समावेशी शासन ही लोकहित का नींव है। उसकी जो जी, जी। अवधारणा है उसी के आधार पर लोकहित संभव है। और राम राज्य तो आदर्श था ही, लेकिन आपने उसका विस्तार से विश्लेषण करके जो प्रस्तुत किया वो निश्चय ही बहुत सराहनीय है। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और जी। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री शंकर वेंकट रमन नारायण एवं उमा शंकर जी को। ये शायद श्री शंकर वेंकट नारायण जी प्रस्तुत करेंगे। उनका मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जब कोई भी अच्छा आदर्श राज्य होता है, शासन होता है, तो वो तभी आदर्श बन पाता है जब उसका राजा आदर्श हो। तो एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, उनका क्या राजधर्म होता है, इसी विषय पर शंकर वेंकट नारायण जी और उमा शंकर जी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है ड्यूटीज ऑफ द रूलर, राजधर्म इन टुडेज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। नमस्कार, नमस्कार, सर्वेभ्यः नमो नमः। 1 मिनट दे दीजिए मैडम। मैं जी 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 बिल्कुल। It is here. Yeah. got this computers. Deny, no? Deny. Share. एक मिनट मैडम। जी जी आप सेट कर लीजिए। Sharing is not happening. या तो मैडम कुछ सिक्योरिटी सेटिंग है, मैं यही चाह रहा हूँ। कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर? आई विल चेंज माय सेटिंग्स बाय देन। ठीक 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 ठीक। हम अगले वक्ता को आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण पिल्लई जी उपस्थित हैं। यस मैडम जी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और रामायण और भगवत गीता हमारे सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं। और सब उनकी जो गाथा है, संदेश है, यदि ऊपर से देखा जाए तो सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन हम उनके गूढ़ आध्यात्म को समझें तो कहीं कोई सूत्र है जो उनको जोड़ता है। और राजयोग के आध्यात्मिक पक्ष पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे आज श्री राधा कृष्ण पिल्लई जी। उनका विषय है द एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम ऑन राजयोग, अ कॉमन थ्रेड कनेक्टिंग रामायण एंड श्रीमद् भागवत गीता। आपका स्वागत है राधा कृष्ण जी। Respected Alka ji and distinguished delegates, very good evening to everyone. Okay, the topic is ancient spiritual wisdom on Raja Yoga, a common thread connecting Ramayana and Srimad Bhagavad Gita. And for Raja Yoga, I have taken the Raja Yoga wisdom that is being imparted through Brahma Kumaris. It is basically, if you look at the
what is happening in the world is basically interplay of three entities: the soul, the supreme soul, and the nature made of 5 elements. And soul is a conscious entity dwelling the body and doing everything through the body. And the supreme is the supreme of all the souls, again as a constant point of light. And the body is made of 5 elements of the earth. And the supreme soul, regarded as the father of all souls, is a point of divine light, and is also ocean of all wisdom, knowledge, powers, and virtues. You can see reference to point of light in almost all belief systems. Okay, when you come back to the soul, it has 3 subtle entities, faculties: the mind, intellect, and sanskar. Mind bring the thought, intellect basically kind of take the decision or judgment. And once you kind of translate a thought into action, it becomes part of our sanskar or impression. And the soul is originally pure with all virtues, knowledge, purity, love, peace, happiness, bliss, and power. And over a period of time, soul starts losing its original virtues. That is what is shown through the cycle of time. Consists of 4 yugas: Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. Satyuga and Treta Yuga, the soul were having all its original virtues, and it was fully soul conscious. And Dwapar Yuga and Kali Yuga started losing its virtues because of the body consciousness. As a result, started suffering from sorrow and peacelessness. Again, the cycle has to repeat. That is, Satyuga and Treta should come, and that is another way we call the Ram Rajya, in fact, where everything is perfect. The soul is perfect, and the nature is in harmony with the soul, and everyone leading a peace and happy life. Okay, in the Raj Yoga, the soul is originally pure and peaceful, as I mentioned earlier, and the supreme soul is the purifier and the guide. When the soul becomes impure, it purifies and guides back to liberation. And the vices are the inner enemies of the soul. There's ego, anger, greed, etc. And the remembrance of the soul, of the supreme soul, that is reconnection of the soul and supreme soul, purifies the soul. And finally, the inner sovereignty and liberation is acquired. So the meditation practice include being soul consciousness and remember the supreme soul, concentrate, contemplate, realize, and experience the virtues. So here we have seen the soul, which is originally pure and conscious, and the supreme soul is ever pure and divine guide. And then the soul goes through a kind of soul conscious to body conscious. When it becomes body conscious, all the vices started kind of accumulating in the soul. Now let us see the analogy with Ramayana. Okay, the Sita the soul could be treated as Sita. Sita is originally pure and is subjected by the vices. That is the Raman. Okay, Rama is the supreme soul, the divine rescuer of the soul and the guide. And Raman is nothing but the ego or vices. That is all the vices that got accumulated in the soul. Then comparing with Srimad Bhagavad Gita, the soul is none other than the Arjun. Okay, Arjun is in a confused and morally conflicted state, and Krishna is the supreme soul, awakening the inner clarity in Arjun. Arjuna, we are all souls, in fact. And Kauravas are, the symbol of inner enemies like greed, fear, delusion, etc. And Gita, it is very well stated that whenever there is a decline in the righteousness and increase in unrighteousness,
Arjun, at that time I manifest myself on earth to protect the righteous and annihilate the wicked, and to re-establish the principle of dharma. I appear on this earth age after age. I'm basically appearing to kind of re-establish the Ramarajya that we lost. So once the Supreme purifies the soul, that is, when soul become peaceful, strong, and happy, the mind become clear, creative, tranquil, and alert. That lead to a body which is disease-free, strong, and balanced. That get reflected in the relationship that becomes harmonious, truthful, and loveful. That get reflected in the society that is organized, just, and peaceful. And that has an impact on the environment. Environment become clean, harmonious, and balanced. This is the kind of pathway to the Ram Rajya. Okay, this is the pathway to the sustainable development goals. So to summarize, you can see that both Ramayana and Gita depict the same inner journey through different lenses. In fact, in Ramayana, the outer narrative of soul's captivity and rescue is kind of described, and also shows the story of inner loss and rescue. It's a cyclic behavior, inner loss and rescue. Okay, this keeps on repeating. Gita, it basically covers the inner dialogue of soul's awakening and the battle, and explains the psychology of the inner battle. Okay, and Raja Yoga offers the method of spiritual transformation. Okay, and you can see that the same spiritual transformation could be looked from Ramayana and Gita's perspective, in fact. Okay, that's all I wanted to share. Thank you very much for your patient listening. I hope I am on time. बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया, और एक बहुत ही गूढ़ और क्लिष्ट विषय को आपने बहुत सिंपल ढंग से प्रस्तुत करके सबको समझने में बहुत आसान कर दिया उसको। जो ये बहुत ही गूढ़ विषय है हमारा अध्यात्म का, जिसको आपने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो सोल, सुप्रीम सोल और नेचर में बटा हुआ है। और आपने जो है सोल के लिए, यदि त्रेता युग में सीता जी को बताया, तो द्वापर युग में अर्जुन का आपने उनसे तुलना की है। और सुप्रीम गॉड उसमें यदि राम थे तो इसमें श्री कृष्ण है। और नेचर ऑफ हार्मोनी में जो है आपने जो सोल बाई कॉन्शियसनेस थी वो रावण को यदि त्रेता युग में बताया तो द्वापर में कौरव को बताया। जैसा कि हमको ये समझ में आया, हम जहां तक हम समझ रहे हैं, आप बताइए हमने सही समझा कि नहीं समझा? Okay, it's a different perspective on viewing this, because compared to the traditional belief, there is some kind of difference in terms of the interpretation, in fact. जी 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 जी। So, लेकिन आपने जो का इंटरप्रिटेशन दिया है और जिस तरह से बहुत सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन किया है, वो बहुत ही अच्छा है। उसके लिए आपको एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए। बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया इसको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब श्री शंकर वेंकट नारायण जी, क्या आप उनका सेट हो गया? श्री शंकर जी, आप क्या उपस्थित हैं यहाँ पर? जी, शंकर जी आपका स्वागत है। You are not audible, शंकर जी। नहीं, आप सुनाई तो स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आपका स्क्रीन पे तो दिखाई दे रहा है। सर्वेभ्यः नमो नमः। जी जी, अब सुनाई दे रहा है। Yes. Thank you, organizers, for giving me this opportunity. I'm going to talk about duties of a ruler, Ramayana's Rajadharma in today's global context. And I would like to prove that even after almost 10,000 years, the principles enunciated in Rajadharma are very much relevant in today's political landscape.
Ramayana is multi-generational in appeal because it is not just a chronicle of Lord Rama's life, but it is a guide for harmonious living at the individual level and at the community and societal level. Why is that so? Because of the central character, Rama, who is Ramo Vigrahavan Dharma. He is the epitome of Dharma. That is why Ramayana has multi-generational appeal. Rajadharma is essentially code of conduct for the ruler. And in Valmiki Ramayana, Rajadharma is elaborated through a series of questions that Rama poses to Bharata at Chitrakuta. This is in Ayodhya Kanda, Sarga 100. And these are the questions. And I will also be talking about the parallel in today's political parlance. Are the people living peacefully, respecting the king and following the king's orders? This is what Rama asked Bharata. This is law and order today. Does the king prefer one learned man instead of many inexperienced persons in his council of ministers? This is experienced, broad-based cabinet. Does the king have ministers and officials of unquestionable loyalty, dedicated administration? Do the ministers and advisors maintain harmonious relations with the public, citizen connect? Whether the general and other key military personnel have passed the test of loyalty, patriotic bureaucracy? Are labor relations maintained well? And are salaries paid on time and equitably? Efficient personnel or HR management? I mean, these are today's governance concepts. Then again, Rama continues the questions to Bharata. Are the women safe and protected by the state? Women's safety and rights? Are the forests maintained well? And are the animals taken care of well, which is environment, wildlife, and ecology? Is the financial position of the kingdom stable, budgeting and financial administration? Is the law and order situation under control? Law and order and justice? Are elders and teachers treated with respect? And are religious activities carried out in an appropriate manner? Senior citizens' welfare and religious endowments? And is the king aware of the evil habits that he may end up with? This is vigilance and Lokayukta. So the concepts of Rajadharma find a parallel even in today's political landscape. And the main duties of the king have been prescribed as follows: protecting the subjects, flora and fauna, upholding dharma, ensuring justice, maintaining administration, leading in battle, and being accountable. In fact, one very important aspect we have to understand is that in under Raj Dharma, the king is owning the or sharing the karmic merits of the citizens as well as the karmic demerits of the citizens, and therefore the king has a responsibility, vicarious responsibility, to ensure that his subjects do good karmas. Qualities of an ideal king: wisdom and discernment, righteousness, self-control, and benevolence. Now let us compare Rajadharma with the contemporary forms of governance, which are liberal democracy, which is basically the Western political thought, authoritarianism, dictatorship, and communism. Rajadharma versus Western political thought. The foundation. Rajadharma rests on dharma, which is the comprehensive, unchanging moral and cosmic law. Western political thought system is grounded in secular logic and laws created by people. Next point, ruler's role. Monarch serves as a moral model, embodying the ideal of philosopher's king, and the primary duty of the king is prajapalana, which is to ensure complete well-being and security of their subjects. What about Western political thought? Ruler's role ranges from guaranteeing the natural rights of citizens to preserving social order through exercise of authority.
Source of legitimacy is gained through dharma. Right to rule arises under Western political thought. Right to rule arises from the agreement of the people being governed and adherence to the constitutional law. State's goal under Raj Dharma is to achieve Ramrajya or Dharmarajya. Under Western political thought, objective centers on achieving political stability, safeguarding the rights of individuals. So this is Western political thought or liberal democracy. Now let's compare Raj Dharma with authoritarianism. Source of authority. Authority to rule is derived from upholding dharma. Under authoritarianism, authority is absolute and is based on the discretion and personal wishes of the ruler. Limitations on power. Significant moral and ethical limitations on the ruler's power. Under Raj Dharma, authoritarianism, power is total and is not subject to any scrutiny. Decision making. Power involves seeking the advice and opinions of others. In fact, when Rama was to be, or Dasharatha wanted Rama to be crowned as the prince, he sought the advice and agreement of all the ministers in his cabinet. It was not an individual decision. Now, under authoritarianism, decisions are made according to the ruler's private wishes. And the ideal concept is geared towards a welfare state, creating a welfare state. Whereas under authoritarianism, system carries the risk of degrading into tyranny because it is a one-man rule. Raj Dharma versus dictatorship. Source of authority is again upholding dharma, whereas under dictatorship, the entire power is concentrated in the hands of a single authority. Often the power is gained through violence or pressure. Goal of governance. The main objective is well-being, harmony, and financial success of every person. Dictatorship focus is on keeping the ruler in authority. Use of force, punishment. Dand is employed to uphold justice. Whereas under dictatorship, coercive power is used to control, repress, and generate fear. Morality and ethics. System demands that the ruler possesses a high degree of moral soundness. Under dictatorship, moral principles are ignored in favor of whatever is politically convenient. Now, let's compare it with communism. Source of authority. Again, authority is derived from upholding dharma under Raj Dharma. Dictatorship, power is total, concentrated in the hands of a single authority. Often, the power is gained through violence and pressure or pressure. Goal of governance, main objective is well-being. Here, the focus is on keeping the ruler in authority continuously. Use of force and punishment. Dand is employed to uphold justice, whereas under dictatorship, coercive power is used to control, repress, and generate fear. Morality and ethics. System demands that the ruler possesses a high degree of moral soundness, practices self-control, and maintains ethical behavior. Whereas under dictatorship, moral principles are ignored in favor of whatever is politically convenient, provides personal enjoyment, and secures one's survival. And लीव करो ना, लीव कर दिया, everlasting फिर भी legacy आवाज तो आ रही। also is due to the fact that the fundamental tenets of Rajya and Rajadharma are applicable even today. And I'm going to explain it in this slide. There is a very famous saying, Yatha Raja Tatha Praja. And therefore, to have virtuous citizens in any land, the ruler has an important role to play. Now, 2 मिनट आपके बचे हैं अभी. Okay, madam. When compared to authoritarianism, dictatorship, and communist frameworks, Rajadharma fares better because the ruler is a servant leader, guided by an all-encompassing moral code. Absolute power is not vested in the hands of a single individual or authority. Now let's look at liberal democracy.
there is a growing realization that too much focus on individual rights and freedoms ignore the fact that individuals are part of a larger communion. Excessive individualism can weaken social bonds and security, and excessive emphasis on rights leads to responsibilities getting ignored. And therefore, in conclusion, a proper balance between individualism and community, rights and responsibilities, and material and spiritual values is essential, something that can be achieved by adapting the Rajadharma template to contemporary requirements. A final word. Chakravarti Rajagopalachari, Rajaji, as he was popularly called, was the last Governor General of India before it became a republic in 1950. And there is a saying about Ramayana that he has said, which is so powerful and so impactful. There is no country which can be governed more easily than India. You have only to appeal to traditions. All the great old kings of the past, Janaka and Sri Rama, are still alive and governing our hearts. I am not the Governor General. Sri Rama is. Dhanyavada. Thank you. बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी। आपने एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए और श्री राम में क्या गुण थे, और सबसे बड़ी बात कि आपने इस बात को यहाँ पे प्रस्तुत किया कि श्री राम यहाँ पे आज भी उपस्थित हैं, और ये बात सच है कि ईश्वर हैं तभी हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, वरना तो सृष्टि नष्ट हो जाती। बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आज के इस सत्र के अंतिम वक्ता हैं श्री प्रतीक खन्ना जी। प्रतीक खन्ना जी उपस्थित हैं यहाँ पर। मैडम, मेरा एक प्रश्न था अभी जो स्पीकर थे उनसे, क्या जी, मैं जी। पूछ सकता हूँ या बाद में पूछें? नो। पहले एक बार प्रतीक खन्ना जी को देख लेते हैं, उनका वो हो जाए, उसके बाद आप पूछिएगा। धन्यवाद। प्रतीक खन्ना जी हैं क्या यहाँ पे? प्रतीक जी, कैन यू आप अपना अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा जी, आपका स्वागत है। आप अपना जो वक्तव्य है यहाँ पे शोध पत्र प्रस्तुत करिए प्लीज। सभी को नमस्कार। My presentation is titled Guidance from Ramayana on Navigating Moral and Ethical Dilemmas in Life. The Ramayana offers a rich repository of ethical insights that remain relevant across time. In this presentation, we examine how the narrative and characters illustrate principles of dharma that help individuals make wiser choices. We also explain how these lessons can be applied to contemporary ethical challenges. This analysis draws on a close reading of the Ramayana and its key episodes involving moral decision-making. The characters were studied, and secondary commentaries and scholarly interpretations were used to support the framework. The concept of dharma in Ramayana represents duty, righteousness, and moral harmony aligned with cosmic order. Ramayana demonstrates that dharma is not always absolute, but depends on context and one's role in society. Understanding this layered nature of dharma is crucial for making balanced ethical judgments. Now, in Ramayana, Ram is the ethical exemplar. His decision to embrace exile when he had the power to pursue alternate options, it illustrates his commitment to duty above personal gain or comfort. Throughout the epic, he consistently chooses the morally upright path, even when it causes personal loss. His leadership demonstrates how compassion and justice must work together.
The next most important character is that of Mata Sita. Sita ji represents integrity, autonomy, and inner courage, especially during moments of adversity, particularly while in captivity. During the period when she was in captivity, Ravan gave her the choice of an alternate course. She knew she was in a hopeless situation on an island surrounded by ocean on all sides and in a very helpless position. But in spite of that, she chose the path which was morally correct. Her choices highlight the power of truth and self-respect in confronting injustice. Sita's conduct shows how moral strength can coexist with compassion and dignity. During the period of her captivity itself, Hanumanji offered to carry her back to Sri Ram, but she declined the offer. And the reason that she provided was that she will instead wait for her husband to rescue her rather than fleeing via alternate mechanisms. So even in that adverse circumstance, she chose the option that was morally the most correct one. Then let's look at the character of Hanumanji, his ethic of devotion and intelligence. Hanuman embodies a combination of devotion, humility, and strategic intelligence. His actions reflect an ethical mindset in which loyalty is balanced with thoughtful decision-making. He demonstrates the importance of emotional intelligence in resolving conflicts ethically. So, there are several episodes in Ramayana where Hanumanji was carrying out the heavy lifting, particularly during the conquest of Lanka. But at every point of time, he attributed his success to the blessings of Sri Ram. So, had it been a normal mortal character, ego could have easily found a place in his heart, but not with Lord Hanuman. He was always on the right path where he never allowed ego to distort his vision, and he knew what was the guiding factor behind his success. Next, we look at the character of Ravan. This character provides us with ethical warning. Ravan reminds us that knowledge and power become destructive when not guided by humility or self-control. Despite possessing great wisdom, his ego blinds him to the consequences of his actions. His downfall illustrates that partial virtue cannot compensate for moral arrogance. So he had all the powers that any mortal could have dreamt of at that point of time. But in spite of that, he was blinded by ego and his vices, and which in turn ultimately led to his destruction. Based on these episodes, we can derive an ethical framework from these characters. This framework emphasizes evaluating competing duties, seeking counsel, and considering long-term consequences of our actions. The Ramayana teaches that ethical action must be deliberate and implemented with sincerity. The ethical framework would comprise of first, the identification of dharma, where we determine the relevant ethical principles and duties applicable to situation. Then hierarchical evaluation. When multiple principles apply, then we can evaluate the relative importance using the hierarchy suggested in the epic. Then deliberative consultation. There might be times when our individual analysis may not be adequate, and in those circumstances, we can seek counsel from those with relevant ethical wisdom. And integrated implementation, where we execute the decision with attention to both ends and means. Balancing ethical duties, real-life dilemmas often involve conflicts between personal, familial, and societal duties.
Ramayana provides examples of how such conflicts can be approached with clarity and moral discipline. It also highlights the concept of apadhar, which guides decision-making during crisis. Applying these principles in modern life, the lessons of Ramayana can guide professionals who face ethical challenges in the workplace. It encourages integrity even when shortcuts appear tempting and reinforces the value of ethical leadership. The text also helps individuals address unethical directives with clarity and courage. Conflict resolution and human values. The epic promotes resolving conflicts by focusing on truth, empathy, and the recognition of shared humanity. Characters such as Lord Ram and Hanuman demonstrate how respect and dialogue can prevent escalation. These principles can be applied to personal, professional, and social conflicts today. Ethical character, according to Ramayana, is built through practice, reflection, and learning from moral exemplars. The epic emphasizes integrating emotional balance, rational thought, and virtuous action into daily life. Such development strengthens one's ability to respond wisely to ethical dilemmas. To conclude, Ramayana provides a timeless ethical model grounded in dharma and compassion. Its teachings help individuals navigate complex dilemmas by promoting clarity, humility, and responsible action. By applying these insights, we can make more thoughtful decisions in both private and public life. Thank you. बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया और रामायण के जो मॉरल और एथिकल डायलेमा है उसके बारे में आप बहुत सरल और पॉइंट वाइज आपने जिस तरह से पूरी रामायण का सारांश प्रस्तुत कर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब हमारे श्रोता विद्वानों में से कोई एक थे जो शंकर वेंकट नारायण जी से क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, कृपया आप पूछ सकते हैं। जी, मैं रामचंद्र शुक्ल। नमस्कार। मेरा प्रश्न शंकर सर से है। आपने लोकायुक्त वर्ड आपने अपने प्रेजेंटेशन में यूज किया। हाँ जी। तो लोकायुक्त nowadays it is practiced. Whether it was practiced in the time of Ramraj? In Ramraj, there were multiple councils. There was something which was an administrative council, which was the cabinet. Then there was another one, which was a judicial council, which went into the judicial decisions and of the king. And therefore, the king also had to take a decision which did not conflict with any of the legal precedents. And the third, of course, was something which was a community, community council. So these, I mean, they are called Sabha, Samiti, and Sansad. And each one of them had a specific purpose. A Sabha was the meeting place of the king and his ministers. Samiti, a court of justice. So there was something like a Supreme Court, a High Court, a system which also checked abuse of power by the king. And for them, instead of a constitution that we generally, have today, the dharma, the Sanatana dharma was that framework against which the king's actions were judged. So that was the second council. And of course, the third was a Sansad, which is a social gathering of people. So you can say that was a Diwane Am. Diwane Khas would perhaps be the council of ministers. And then there was this Samiti, which was the justice, a court of justice. आपके रिसर्च का ये जो आपने जो बुक्स या जो ग्रंथ आपने कंसल्ट किए वो वाल्मीकि रामायण या फिर रामचरितमानस या फिर और कोई रामायण है? Valmiki Ramayana, I've taken it from also a series of articles on King's Duty that was published in the Hindu newspaper in 2013. Then I have also looked at a research paper produced, by Prashanta, which I have quoted in my article. I've given references.
ideal polity as seen in Ramayana, its relevance for contemporary society. This appeared in International Journal of Creative Research Thoughts. So this was it. And then, Okay. yeah, Western Okay, political thank you. philosophy, I've taken it from others. Encyclopedia Britannica and Plato, the Republic. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot. आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। आज सुश्री स्मिता कुमारी जी, राहुल अनंत कुलकर्णी जी और मंदार महेश्वर राव कुलकर्णी जी का संयुक्त ये शोध पत्र था। शंकर वेंकट नारायण और उमा शंकर जी का संयुक्त शोध पत्र था। राधा कृष्ण पिल्लई जी और अंत में प्रतीक खन्ना जी ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। आज की चर्चा निश्चय ही बहुत ज्ञानवर्धक थी और रोचक थी। हम लोगों को बहुत से नए पक्ष सुनने को मिले राम राज्य के बारे में, और इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आदरणीय ओम जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो जो है अपना यहाँ पे समापन की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। आपके उत्तम संचालन के लिए बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद। आपने समय से अपना का सत्र पूरा कर दिया। समय अभी 5 मिनट बाद शेष है। सभी वक्ताओं का बहुत बहुत आभार इस सत्र में और उसके पहले वाले सत्र में। तो दोनों संचालन पहले सुबह या शाम कहना चाहिए मुझे बात के अनुसार 6:30 से 8:15 प्रोफेसर राहुल कुलकर्णी जी ने संचालन किया। काफी उत्तम संचालन, वो भी समय से पूरा हो गया और ये भी समय से पूरा हो गया। तो सभी वक्ताओं का बहुत बहुत आभार। थैंक यू ऑल द स्पीकर्स, रियली अप्रिशिएट इट एंड वेरी वेल precisely conceived presentations. It's an amazing work all of you are doing. And of course, all the listeners, सारे श्रोता, तो श्रोता नहीं हो तो वक्ता की क्या फिर कीमत है। तो सब श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। आप नियमित रूप से आ रहे हैं और सबको सुन रहे हैं। So I want to thank you and congratulate everybody. But as I have been saying, picture तो अभी बाकी है। We still have 2 more days to go. Tomorrow will be our 5th day, I think, of the online presentations. So tomorrow we will start at 7 p.m. To 8:30 p.m. तो कल 8 पेपर हैं और द टाइटल ऑफ द सेशन इज श्री रामचरितमानस। सो कल के पेपर करीब करीब रामचरितमानस पर आधारित है, किसी पक्ष को लेकर। So please try to join. The link is same as you already know, same link. So 7 p.m. Sharp we will start. So if you have any question for me, तो आप मेरे लिए क्वेश्चन हो तो आप बताएं। कोई प्रश्न हो जिसका समाधान अगर मुझसे हुआ तो मैं करने का प्रयास करूँगा। कल जी कहिए। कल क्विज 8 बजे के भी हाँ है, हाँ हाँ, कल तो वो कल 3 15 कार्यक्रम। मिनट। मैं कल 3 कार्यक्रम है। तो 7 बजे से 8:30 तक तो अपना ये चलेगा। और अपना जो एक हर महीने हम क्विज करते हैं कौन बनेगा राम भक्त, वो 8 बजे से शुरू होगी 15 मिनट के लिए। 8 से तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो है कल, पर वो कुछ इसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा। नहीं तो एक दिन और हमें एक्सटेंड करना पड़ता। तो चलिए जो प्रभु की मर्जी। तो थोड़ा सा 15 मिनट के लिए अगर आप क्विज ले रहे हैं तो उस 15 मिनट आपको थोड़ा सा मिस करना पड़ेगा, अनलेस कल का हम कैंसिल कर रहे हैं या उसको कुछ और। पर आई थिंक इट्स टू लेट नाउ टू कैंसिल आल्सो, क्योंकि सबको सूचित किया जा चुका है। तो 8 बजे से 8:15 तक वी हैव दिस क्विज, कौन बनेगा राम भक्त। काफ़ी लोग आप में से कई लोग उसमें भाग लेते हैं। तो दैट विल बी ए लिटिल टाइम व्हेन यू माइट हैव टू मिस आउट सम ऑफ दिस प्रेजेंटेशंस। पर सब रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो बाद में यूट्यूब में हम देख सकेंगे। और 9 बजे हमारा जो हर साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, साप्ताहिक सभा होती है श्री रामचंद्र भवन की। और इस सभा में 9 बजे पहले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हुआ, जिसमें करीब 20 मिनट लगते हैं। और उसके बाद में भगवान विष्णु के नामों पर आदरणीय डॉक्टर राजवाणी शर्मा दीदी जो यहाँ पर है वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। करीब करीब 6-7 महीने से ये चर्चा चल रही है और हम
राजारानी दीदी से हमने भगवान विष्णु के विविध नामों के बारे में कुछ न कुछ हर 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 महीने नए नए शब्दों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई और मेरे लिए कोई प्रश्न? So we have this online presentations tomorrow as well as on Sunday. Sunday will be also 7 p.m. So मुझे पता है आप सब व्यस्त हैं, कई का सांसारिक जिम्मेदारियां भी हैं। ठंड भी बहुत पड़ रही है, विशेष करके उत्तर भारत में, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, मैं समझता हूँ। अभी मैं भारत से लौटा हुआ हूँ, तो अब यहाँ मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। यहाँ तो टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है कि हमें एसी चालू करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। और वहाँ पे सब जब ठंड लगती तो पता लगता था कि इतनी ठंड में हमें रोल सबको 10 बजे 10:15 बजे तक यहाँ बैठाए रखता हूँ, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। तो अगले साल से हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि जब भारत में ठंड हो तो हमें किस तरह से कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। चलो वो बात की बात है। सो पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर प्रभु ने चाहा तो कल मिलेंगे। आज कई पुराने मित्रों से दर्शन हो गए, राहुल से दर्शन दर्शन हो गए, कभी मिले, हमें मिले तो कई कई वर्ष हो गए। प्रोफेसर राधाकृष्ण पल्ले हमारे बहुत पुराने परिचित मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं कोझिकोड में, उनके भी आज दर्शन हो गए। तो बहु बहु लाभ प्राप्त हो रहा है इस कार्यक्रम से। तो प्रभु अंत में शांति मंत्र के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। ठीक 10 बजे हो जाएगा मेरे समय के अनुसार। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।